और जब हवा देते हैं तो बैट्समैन को आप ललचाते हैं, एंड दैट्स द वे टू गेट अ विकेट. अगर आपको याद है बिशन सिंह बेदी, प्रसन्ना, वेंकट राघवन और उनके पहले सुभाष गुप्ते, विनू मानकर, ये ऐसे बॉल टॉस करके बाहर, आपको याद होगा टॉलचट को बाहर खींच के प्रसन्ना ने विकेट ली थी. टॉक अबाउट दैट लेटर. दैट्स बेटर, दैट्स बेटर. Look at the way he's varying the line and length and the delivery. थोड़ी सी शॉर्ट गेंद थी, अंदर की जानिब कट होती हुई इस गेंद को खेला है कवर्स के क्षेत्र में. एक यहाँ पे और एक डॉट बॉल. और सर जी आपने काफी इंटरनेशनल खिलाड़ियों का यहाँ पे जिक्र किया, और मैं भी अपने आपको भाग्यशाली समझता हूँ कि आपके साथ मेरे को कमेंट्री करने का मौका मिला है, क्योंकि बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेस में आपने कमेंट्री की, T20 इंटरनेशनल मैचेस में कमेंट्री की है, और टेस्ट क्रिकेट मैचेस में भी आपने कमेंट्री की है. इसी के साथ अगर देखा जाए तो 6 ओवर के बाद टीम का स्कोर 37 फॉर नो लॉस. Well, while the next over is being bowled, I'm going to talk to this wonderful lady out here. Tell me, 37 without a wicket, what do you think your captain should be doing to take the first wicket? No idea. No idea, she says. Doesn't really matter. चोपड़ा साहब, पहली विकेट कैसे आएगी आपके पास? They are lucky enough. Just because of that wicket didn't fall till now. Otherwise, we have too much chances. Wonderful chatting with the Indore side. I'm sure we'll talk to the Dubai side a little later. But Sandeep, 37 without a wicket, हमने सोचा था शुरू में अगर पहली विकेट इनके पास आती तो कितना इनके लिए फायदा होता. लेकिन जिस तरह से ये दोनों बल्लेबाज खेल रहे हैं, मेरे हिसाब से अच्छी पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है. इसीलिए मैंने कहा कि अभी उन दोनों बल्लेबाजों की पढ़ाई अच्छी हुई है. नए गेंदबाज सोहेल मसूद, देखना है कि पहली विकेट निकालते कि नहीं. पावर प्ले अभी खत्म हुआ है. 6 ओवर के बाद 37 पर एक भी विकेट नहीं है. वो सीधे बल्ले से गेंद को खेला है, लॉन्ग ऑफ की तरफ गेंद जाती हुई. 1 रन दौड़ के पूरा किया बल्लेबाज ने. 1 रन के साथ टीम का स्कोर 38. So, पहले 6 ओवर समाप्त हो चुके हैं. We are now into the 7th over, 38 without a wicket. So they've used 4 bowlers. They started with Dinesh Chopra and Jamil Khan, Sheikh Sadiq, and now Sohail Masood. Talking of Indore, that wonderful city. मेरे काफी रिश्तेदार वो सिटी में है, इंदौर में. Oh, that's a beauty. That's a beauty. Look at the way it spun. He's certainly spinning the ball on this track. The batsman will have to be extremely careful. Better one again. संदीप, कोई चांस नहीं मिल रहा है बैट्समैन को अपने आर्म्स ओपन करने के लिए. बिल्कुल आपने सही कहा सर जी. 57 जर्सी है गेंदबाज की. और एक बल्लेबाज मेरे को याद आया, वो यहाँ पे खेला है गेंद को ऑन साइड में, एक ही रन दौड़ के पूरा किया. बल्लेबाज मेरे को याद आया दिनकर बलवंत देवधर. उम्र के 57 एज में उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है. ऐसे कई सितारे हैं अपने महाराष्ट्र में. C.K. Naidu played at the age of 60, and I'll tell you a story later about the great Colonel C.K. Naidu. He came from Indore. Mushtaq Ali was from Bhopal, 6 foot 3 inches. When I shook his hands, when I did an interview with the late Mushtaq Ali, his hands were like iron, solid hands. I'll tell you a story at the end of this over of Colonel C.K. Naidu. Change of bat, has it helped him? Yes, it certainly has helped him. आपने पूछा बैट चेंज की थी, बैट चेंज की और चौका मिला. बैट चेंज की, चौका तो मिला यहाँ पे.
सर जी लेकिन आप भी यूनिवर्सिटी की तरफ से क्रिकेट खेला करते थे, वहां पे आपकी टीम में कितने बल्ले थे? At the end of this over, perhaps. That's better. Wild slog. Can't beat the fielder. So this is an eventful over for the batting side. 44 without a wicket. देखो हमारे ज़माने में हमारी जो साइड होती थी, a lot of them went on to play for India. Some of them, of course, played for Mumbai. Sandeep Patil was in the side which I played. You also had Rahul Mankad, Vijay Mohan Raj, Hemant Shah, Suresh Shastri, who then went on to play for Rajasthan. Avdut Zarapkar, Dilip Vengsarkar played the last year that I played the university. Shishir Hattangadi came a little later. Mumbai had a wonderful side. The Rohinton Baria Trophy, which is the supremacy of inter-university. But you go back to Indore, the Holkars. Remember the side which the Holkars played for? Colonel C.K. Naidu led them. And what a side they had in the 1940s and the 50s. And there's a story. C.K. Naidu was 60 years old. The great Vinu Mankar was in form. There was a match at the Cricket Club of India, which is the Brabant Stadium. The first ball, Vinu Mankad beat C.K. Naidu. And he turned around and said, Mr. Mankad, the next ball is a 6. New over. Oh, he's beaten there. He's beaten there. Finally. Just when I was about to tell you that C.K. Naidu hit a 6 of that second ball, Indore, the central strikers are able to break through, get that important wicket, and they get the wicket of Jasleen Anand, bowled of the bowling of Sheikh Sadiq. What a partnership. Sandeep 44 for the first wicket. He's done his job, hasn't he? अच्छी पार्टनरशिप बन चुकी थी दोनों बल्लेबाजों में। इस बीच गेंदबाज ने यहाँ पे विकेट हासिल करके एक थोड़ा सा जो दबाव था वो दबाव इस समय कम होता हुआ फील्डिंग करने वाले टीम पर बल्ला बदला, चौका मिला, लेकिन यहाँ पे विकेट भी हासिल की गेंदबाज ने। अच्छे बल्लेबाज दौरा। So the captain now goes into the center, Lucky Abbas, for the Dubai Rhinos. I wonder how the name Dubai Rhinos came about. I don't recollect seeing a rhinoceros in Dubai. Assam, remember Kaziranga, the one-horned rhino? It's a ferocious animal. It's got skin so thick that an arrow cannot pierce. A spear cannot pierce. And the Dubai Rhinos now losing their first wicket. The captain now walks in, Lucky Abbas. He faces Sheikh Sadiq. Lucky Abbas, no man in. वो फ्लाइट दी थी गेंद को गेंदबाज ने। एक रन फिर भी मुकम्मल किया इन दोनों बल्लेबाजों ने। टीम का स्कोर 45। 45 रोहित शर्मा का जर्सी, रोहित शर्मा की जर्सी यहाँ पे हमें याद आती हुई इस स्कोर के साथ। ओ कट का इस्तेमाल किया, स्ट्रेट ड्राइव, मिलेंगे 4 रन, चौका। So yes, that wicket falling has not deterred the Dubai Rhinos in their stride. Mansoor is in fine nick. And Mansoor is unbeaten on 26. He's got 26 of just 23, which is what a T20 match or a game is all about. 26 of 23, and they now move up to 49 for 1. That wicket of Jasleen Anand, bowled by Sheikh Sadiq, and he scored 20 of 21 with the help of 3 fours. 49 for 1.
flatter one this time, not too much of air, the right thing to do, because this batsman is in form and they get that single which takes them to 50, and a well-made 50 coming in 7.5 overs. So they're doing well. Sandeep averaging close to 6 at this stage. And the moment you have wickets in hand, you take these singles, make sure you keep your eye on every single, you don't miss it. End of over number 8. Dubai Rhinos are 51 for 1. 51 फॉर फन, एक मात्र विकेट यहाँ पे गिरी है। और हमने इससे पहले चर्चा की थी बल्ले की। पहले के जमाने में एक टीम के पास में ही 4 या 5 बल्ले हुआ करते थे, 11 अगर प्लेयर रहेंगे तो। अभी एक प्लेयर के पास 10 या 11 बल्ले होते हैं। ये क्या है? Well, that's what T20 cricket is all about. You know, you make sure you go back to the Indian side, batting up to number 8. Strengthen your batting, have good 5 bowlers, have a good fielding side. It's a different matter that India lost in the final to Australia. But I don't think they did badly. We all know that they won 10 matches on a trot. That's not easy to do. I don't think they had the pressure. This was the best Indian side that I've seen for a long, long time. Coming back to this game now, 8 overs, 51 for 1. So they will have a bowling change. Remember, they've got a minimum of 6 bowlers who can bowl. Dinesh Sharma is the new bowler. He becomes the 5th bowler to bowl for the Indore side. क्या एक्सपीरियंस है सर आपका? दिनेश शर्मा 5वें गेंदबाज का इस्तेमाल यहाँ पे टीम करती हुई। सामने बल्लेबाज अगर देखा जाए, लकी अब्बास इज ऑन स्ट्राइक। ओ अच्छी गेंद थी और अच्छा डिफेंस किया, 1 रन दौड़ के पूरा किया बल्लेबाज ने। अच्छे गेंदों का सम्मान करो, बुरे गेंदों का अपमान करो। अभी ऐसा ही कुछ करेंगे ये दोनों बल्लेबाज, क्योंकि नजरें जम चुके हैं बल्लेबाज मंसूर की। That's the wicket that they want so badly. Now the non-strikers end. Very easy to identify the two batsmen. Mansoor is the taller of the two. Lucky Abbas, the shorter of the two. He is the captain. Total now moving up to 53 for 1. Oh, he's out. That's an appeal. He's an appeal. The umpires are so watchful. The bowler Dinesh Sharma says, I've got him. But the umpire so vigilant. The combination of Mandar Chamare and Aditya Raut out there. Oh, he's beaten. He's beaten there. Wonderful keeping. Asks the question. Looks at the square leg umpire and says, Mr. Umpire, have I got him? He says, no. Carry on with the game. 2 wonderful deliveries, Sandeep. Both beaten by the pace and the bounce which kept low. काफी मदद मिल रही है यहाँ पे स्पिनरों को। देखिए यहाँ पे फील्डिंग भी अच्छी है। That's a good ploy, Sandeep, for the batsman to do. He's been beaten of 2 balls. So what he tried to do is play it down to short third man, steal a single, get the pressure of his own shoulders.
Lucky there, lucky. नाम लकी अब्बास है. Last 4 balls he's been lucky. ओवर की समाप्ति यहाँ पे टीम का स्कोर 53 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट आफ्टर 9. So the last wicket fell with a total on 44. They are now up to 53. 9 runs this pair has put on now. And that wicket fell in the 8th over, in the 7th over, 7.5. So they've used 5 bowlers so far, starting with Dinesh Chopra and Jamil Khan. And then they've used Sheikh Sadiq, Sohail Masood and Dinesh Sharma. So Sohail Masood to continue from our end. Sandeep, I'm told that this is the Dandekar stand end. The one above me, I just read some time back. It said that this is the late Dandekar stand. So it's obviously been named by someone who either was a cricketer or was a cricket fan. And it's good to name stands after people who have devoted themselves to the game, जिन्होंने अपना आयुष्य खेल के लिए अर्पण किया है. ओमटेक्स क्रिकेट एकेडमी के बारे में अगर कहा जाए तो बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो आगे आ चुके हैं. कई खिलाड़ियों का मैं जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पे. फिलहाल गेंदबाजी का शोर संभालते हुए सोहेल मसूद, पहली गेंद इस ओवर की और 1 रन दौड़ के हासिल किया बल्लेबाजों ने. टीम का स्कोर धीरे से आगे बढ़ता हुआ 54. ओ बैकफुट पर जाके खेलना चाहते थे बल्लेबाज. यहां पे डॉट बॉल आती हुई. थोड़ा सा दबाव अभी पिछले कुछ ओवर में हमने देखा है बल्लेबाजी करने वाली टीम पर. Lucky Abbas in particular, some wonderful bowling that we've seen from both the ends. Sohail Masood and Dinesh Sharma, and before that Sheikh Sadiq. They made sure that they've maintained that corridor of uncertainty. Entice the batsman, make him play, make him slash outside the off stump. Get that square point deep. Get the cover up a bit. Move him back. There you are. That's the stroke which the bowler wants him to play. Sandeep is making sure that that square cut. And there is a fielder in position. Backward point or slightly squarish third man shot. Very dangerous, keeping all 3 stumps open. But sometimes Sandeep, batsman thinks that he's lucky, and when your name is lucky, it adds to the entire charm of your batting. या अभी फिलहाल तो देखा जाए तो सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है बल्लेबाजी करने वाली टीम की ओर से भी. लकी अब्बास स्कोर कट का प्रयास, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद को मोड़ा है तो बल्लेबाज ने. End of the 55, end of the over 55 for the loss of 1 wicket. So we are now at the halfway stage. 10 overs 55, simple mathematics. Even if your maths is bad or wrong or incorrect, 5.5 is what they are averaging. They've dropped down from 6 to 5.5.
Remember, the other rule in this competition is that from a team of 13 players, any 11 can bat and all 13 can bowl. बॉलर नहीं दिनेश शर्मा ना So the bowling from the far end, Dinesh Sharma to continue. He's done it so well. He's done it so well to make sure. Very unlucky, I would say, Sandeep. He's tossed the ball well. He's floated it well. Got the batsman to come out. Second time there. And all that the batting side gets is a single. They're now halfway through, so they're 56 now for one. And even if you take an average of 6 per over, they'll finish off around 110 to 115. Will they get more? That's the million dirham question. That will speed. That will speed. Oh, it's done well. Well, we don't have the advantage of the third umpire, nor do we have the advantage of the action replay to tell you that. But I wonder whether his leg was outside the boundary line and then he stopped it. But it doesn't matter for us. 58 for 1. All that they get is a single to move to 59. So Sandeep, they've got only 4 runs in the over so far. Only 4 in the over. ओ खराब फील्डिंग, एक रन दौड़ के पूरा किया बल्लेबाजों ने। अभी तक अगर देखा जाए तो सीट एंकर रोल निभाते हुए मंसूर दीवार बन के वहां पे खड़े हैं। I think it's time now for Mansoor to start using the long handle, as they say. 59 or is it 60? 60 for 1. So the bowling side, Sandeep has done well to restrict them to only 6 in the over. But the batting side won't mind, because remember, if they do manage to get a single, so they're now up to 61 after 11 overs. 11 ओवर के बाद टीम का स्कोर 61 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। राहुल द्रविड़ की तरह मंसूर अच्छे बल्लेबाजी यहां पे कर रहे हैं, टिक कर खेल रहे हैं विकेट पर। दीवाल अच्छा समय यहां पे बिताया है बल्लेबाज ने, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में राहुल द्रविड़ द्वारा 32,258 गेंदें वो खेल चुके थे, उसमें 44,152 मिनट वो विकेट पे खड़े थे। वैसा कुछ किया यहां पे मंसूर ने। Can someone check those numbers? Love the stats that Sandeep churns out. Over number 12. Fielding side must be very happy conceding only a single. This is the time of the day when 4s and 6s are wanted. Over number 12. Up now to 61 or 62. 62 for 1. Time that Mansoor starts using the long handle. Lucky Abbas, the captain, he knows he's a role to play.
And that's the role. Not connecting. Sometimes the ball just doesn't get to the bat. And remember, if the ball had struck the bat, could have been quite a few runs. There you are. Not timing it well. The intention was to sweep the ball. But he managed to play it with a thick inside edge straight to the fielder. Up now to 63 for 1. अभी तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि खुलकर खेलना पड़ेगा इन दोनों बल्लेबाजों को। काफी बैटिंग लाइनअप बढ़िया है देखा जाए तो दुबई रहीनोस की। गेंदबाज फील्डिंग लगाते हुए कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे और विकेट कीपर द्वारा अच्छी स्टंपिंग, विकेट का पतन होता हुआ गॉन। He's done a wonderful job in the last 12 overs that we've seen so far. The wicketkeeper is Mansoor, and he's done an amicable job to make sure that he gets the better of the batsman in form. Mansoor K stumped there of the bowling of Sohail for 34. The 34 coming of 33 deliveries. And Sandeep, this was expected. With the number of overs drying out, it was time that Mansoor started using the long handle. The only problem was that he was not successful in doing it this time. प्रयास तो किया था बल्लेबाज ने बड़ा स्ट्रोक खेलने का, लेकिन वो पढ़ नहीं पाए उस गेंद को। और अभी नए बल्लेबाज जो मैदान के अंदर गए हैं, रेजी मोहन, ये भी विकेट कीपर है। So well played K. Mansoor for his 34. So Reggie Mohan is the new batsman coming in at the fall of K. Mansoor's wicket, who played a wonderful knock of 34. Keeper name? Short, got the width, got the runs that the team wants so desperately here. The much wanted for Sandeep coming at the right time. The first ball he faced, short, got the width and said, "Thank you, this is my ball." वेलकम बाउंड्री। और इस चौके के साथ टीम का स्कोर 2 विकेट पे नुकसान पर यहां पे पहुंचा है 67 और 2 विकेट। Good all-round cricket. Well played, changed his mind at the very last minute. Made sure that he scooped the ball there. Make sure that you keep your eye on every single end of the over, which is the 13th over, or 12 overs, correction. And after 12 overs, 68 for 2. 12 ओवर के बाद टीम का स्कोर 68 पर 2 विकेट। फिर भी मेरा जो अंदाज है, अभी जो 8 ओवर बचे हैं, उस 8 ओवर में 50 प्लस रन आने चाहिए। 8 sevens are 56. Add 56 to 68 should be close to 120. And which is what I've been saying all through, 120 to 125. That could be a competitive total. So Reggie Mohan on strike. Big, heavy man. I'm sure he can use the bat with a lot of clout. Very well bowled. Very well bowled. Got the one to come in. He checked
that delivery at the last minute. The moment he saw that the batsman wanted to come out and hit the ball, they pick up a single nevertheless. Now to 69 for 2. 69 धावा झालेत आणि 2 गडी बाद झालेत. That's a wonderful stroke. That's a beautiful stroke, playing it inside out. The captain stepped out. Reminded me of some wonderful cricketers who like to play that stroke. Inside out, square of the wicket. Beat the fielders there to perfection. No one had any chance. So now, time for Lucky Abbas to open out. Sandeep, it's now or never. अभी लग रहा है कि अभी हाथ खुले किए बल्लेबाज ने. लकी अब्बास इज ऑन स्ट्राइक. ही इज प्लेइंग ऑन इट. थोड़ा सा बैकफुट पे जाके इस गेंद को खेला था. 1 रन दौड़ के पूरा किया इस बल्लेबाज ने. I love this contest between the bowler and the batsman. Dinesh Sharma checking his delivery at the last minute and checking the stroke was the batsman also. Very well bowled. Very well bowled. Unnecessary single conceded. Remember, every single in the end counts in a T20 game, particularly when the contest is very close. It's important that one of the two teams are looking at the 2 points in the first game. Stepping out, not making room, beaten by the spin there, beaten by the pace and the flight. They pick up 2 runs in the bargain, but he was beaten by the one which was tossed up to take the total then on to 77 for 2. बल्ले का अंदरूनी किराना लग के गेंद फाइन लेग की ओर आई थी और 2 रन मिले बल्लेबाजी करने वाले टीम को. Nearly got him. Excellent wicket keeping. Love the keeper. He's picked up every delivery. End of that over. And after 13 overs, 77 for 2. संदीप अगर आपको याद होगा, मेरे ख्याल से सेकंड ओवर में विकेट कीपर ने अपने लेफ्ट साइड या पहले ओवर था, went to left side, flung himself and picked up what would have been surely 4 byes. After that, the standard of wicket keeping has been absolutely amazing. खरोखरच पहिले की दुसरी ओव्हर वगळता नंतरच्या षटकामध्ये अप्रतिम क्षेत्ररक्षण विकेट कीपिंग म्हणजेच यष्टिरक्षणाचं काम केलं गेलंय विकेट कीपरद्वारा, यष्टिरक्षकाद्वारा. धावसंख्या जर आपण बघितली तर एकूण षटकं समाप्त झाले 13 षटकांच्या समाप्तीनंतर 77 धावा. 13 ओव्हर के बाद टीम का स्कोर 77 पर 2 विकेट. Sohail Masood once again, that square cut. Lucky Abbas just about being eluded, or is it Reggie Mohan? सोहेल मसूद का ये आखिरी ओवर है जिन्होंने अब तक बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 1 विकेट हासिल किया है. 3.1 ओवर में 16 रन देकर अब तक 1 विकेट हासिल की है गेंदबाज सोहेल मसूद ने. ओ इस गेंद को अच्छी तरह खेला है, एक्स्ट्रा कवर की ओर गेंद जाती हुई, अच्छी फील्डिंग वहां पे फील्डर द्वारा. 1 ही रन मिलेगा बल्लेबाजी करने वाले टीम को. I'm sure the massier here would be wanted when the players come in. That ball really struck him on the shin there. The massier, I hope, is ready.
That's a wonderful same fielder. Done well to make sure. Remember, it could have been 2 fours, 8 runs. Valuable stop there in the deep. Yes, once again, can't beat the fielder. संदीप, टोटल गेम जो हमने आज 13 या 14 ओवर में देख चुके हैं, बहुत अच्छी फील्डिंग, बहुत अच्छी बैटिंग और बहुत अच्छी फील्डिंग. इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए क्रिकेट में? अगर ये तीनों डिपार्टमेंट का स्तर बहुत हाई हो, उम्दा हो, तो क्रिकेट देखने में बहुत मजा आती है. ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये 50+ क्रिकेट है. क्या स्फूर्ति है, क्या ऊर्जा है. वो हवा में गेंद थी, अच्छी फील्डिंग वहां पे, 1 रन नहीं रोक सकते. Fitness level of these fielders seems to be extremely good. So that's the end of the 14th over. And they are now on 82 for 2. Inching slowly but surely. Sandeep, I still maintain 120 to 125. Unless, of course, these two batsmen are there in the last 3 overs. The moment you have a new batsman out, it becomes slightly difficult for the new batsman to sight the ball. But Lucky Abbas and Regimon are doing a wonderful job. सोहेल मसूद पहले ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने अपने 4 ओवर का कोटा पूरा किया. 4 ओवर में 21 रन देके 1 विकेट हासिल किए. अच्छी गेंदबाज है सोहेल मसूद दारा. So Regimon on strike, over number 15. So 36 deliveries at their disposal. Dinesh Sharma last over. How well the spinners have bowled. They have spun a web around the batsman. Difficult to score. At this stage, if the 3 spinners had not bowled the way they are bowled, I'm sure the total would have been well past 100. 83 for 2. 15th over in progress. अभी तो हाथ खोलना चाहे बल्लेबाजों द्वारा. ओ बैकफुट पे गए. शॉट सिलेक्शन बहुत गलत था. He's gone. He's gone. Sandeep, by the time you could keep your eye on the batsman, the square leg umpire had raised the finger. So wonderful keeping again by Nasir. Nasir Ali has certainly been the pick of the fielders. So too some of the others. So that's a big blow for the Dubai Rhinos, losing wicket number 3. And they lose an important wicket with a total on 83. So 83 for 3. Sunil is the new batsman. ये कौन सा नंबर है संदीप? 444. कहाँ से आया? क्रिस गेल के जर्सी पे हम 333 वो नंबर देखा है, लेकिन ये नए बल्लेबाज गए उनका 444 जर्सी नंबर. मैंने 777 एयरक्राफ्ट का नाम सुना है, बोइंग 777. 444 कहाँ से आ गया? Sajil is the new batsman. At the fall of that last wicket, the wicket of the captain Lucky Abbas,
16 of 23 with a 4. He was stumped by the wicketkeeper Nasir Ali of the bowling of Dinesh Sharma. Bowling his last over. Slip in place, a right ploy. Striking the ball well there. Copybook cricket. Playing it absolutely straight. Sandeep, when I first came in, I thought all these batsmen would play unorthodox cricket. इसका मतलब है कि बुक के बाहर का क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन जिस तरह से स्ट्रोक्स इन बैट्समैन ने खेला है, दे ऑल लुक परफेक्ट क्रिकेटर्स. बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि किताबों से एक्सपीरियंस कम मिलता है. जो हम अनुभव हासिल करते उससे हमको ज़्यादा फायदा होता है, एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलता है. बात तो करेंगे. टीम का स्कोर हम देखते हैं. फिलहाल 86 for 3. इस ओवर की अगली गेंद डालने के लिए गेंदबाज तैयार. ओहो, स्विप किया इस गेंद को. एक ही रन मिलेगा. लॉन्ग लेग की तरह गेंद को मोड़ा था. एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 87 पर 3 विकेट. और भी नेशनल क्रिकेटर बाकी है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट जिन्होंने खेला है. अबे परवटकर, ये भी उस खेमे में राह देख रहे हैं, बल्लेबाजी हमें कब मिलेगी. अच्छा स्कोर कटा है बल्लेबाज ने. यहां पे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ये मिलेंगे रन 4. चौका. So yes, that 4 wanted desperately by the batting side. So after 15 overs, it's 91 for 3. मेरे ख्याल से परवटकर शायद फेसबुक पे देखते होंगे. फेसबुक की काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं वो. हाँ देखो ना सर जी, गोवा को रिप्रेजेंट किया है, मुंबई को रिप्रेजेंट किया है, बोलान डिस्ट्रिक्ट से भी खेले हैं. उसके साथ में यूएई टीम द्वारा भी उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है. और जो 50+ वर्ल्ड कप होता है, उनके अगर रैंकिंग देखी जाए तो 12 नंबर की उनकी रैंकिंग है, एक अच्छे बेहतरीन ऑलराउंडर के तौर पर. So yes, perhaps the last 3 or 4 overs, if he walks in, all his experience will have to come into play. You got number 99. Why is he one short of the 100 mark? Ajay, the new bowler, 99. I'm sure his team would want him to score that figure when they go into bat. But that surely might not be needed if the Dubai Rhinos get to about 120 plus. So yes, remember, a minimum of 6 bowlers can be used. So a minimum of 6 bowlers. He is the 6th of them. Ajay. Short. Gets the gap. संदीप, अगर ऐसे शॉर्ट बॉल बैट्समैन को इस स्टेज पे मिलेंगे तो 4 नहीं मिलेगा तो और क्या मिलेगा. हाँ बिल्कुल, शॉर्ट बॉल तो हर एक बल्लेबाज की पसंद है, जैसे कि रिकी पॉन्टिंग हो, राहुल द्रविड़ हो, और शॉर्ट बॉल पे पुल अच्छा खेलते थे. So both Regimon and Sajil Balan. Have you seen an appeal of this type? Give him, give him, give him. That's what he keeps on saying. The umpire just not moved. Wonderful, wonderful delivery. Look at the way it spun away. अभी भी bounce है pitch में. It's a wonderful batting wicket too. We've seen some wonderful stroke play.
That's a nice one. आज संदीप फील्डिंग साइड ने करीबन 20-25 रन तो डेफिनेटली सेव किए हैं. बढ़िया फील्डिंग हमने देखा है जब से मैच शुरू हुआ है तब से फील्डिंग करने वाले टीम की काफी संघर्ष करना पड़ा है अब तक बल्लेबाजी करने वाली टीम को रन बनाते वक्त. एकमात्र बल्लेबाज मंसूर को हमने देखा, उसके बाद में थोड़ा सा यहाँ पे रन बनाते हुए देखे बल्लेबाज जसीन अहमद. 16 over 96 for the loss of 3 wickets. So 24 deliveries at the disposal of the Dubai RHINOS. So अगर हर गेंद में इवन एक रन भी बनाए तो करीबन 120 के पास, जो मैं कह रहा था 120, 125. But I see no reason why they can't play some big strokes. 24 deliveries, 4 overs, average 8, average 7, फिर भी 42 बनते हैं. So 42 plus 96 is 138. So I see no reason why the Dubai RHINOS can't get to a total of 135 plus. क्या वो क्षमता दिखाएंगे बल्लेबाज मैदान के अंदर? जैसे कि कई खिलाड़ियों का एक्सपीरियंस रहता है, जैसा कि आपका भी एक्सपीरियंस है. लेटेस्ट वर्ल्ड कप में भी आपने अच्छी कमेंट्री की है. वहाँ पे कौन सा मैच आपको अच्छा लगा कमेंट्री करते वक्त? Well, I remember the first match, England versus New Zealand in Delhi, which was a surprise. So it has to be one of the 6 bowlers. That spun well. So Sadiq Sheikh now comes up, or Sheikh Sadiq. He's bowling his last over. Is he? A third over, correction. Third over. They're getting nothing right there. संदीप अगर दुबई साइड बहुत अच्छी तरह से देख रही है तो उनको भी शायद थोड़ा मज़ा आएगा कि स्पिन अभी भी मिल रहा है, विकेट में बाउंस मिल रही है. लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपको स्पिन बिल्कुल मिले. गुड थिंकिंग, वेरी गुड थिंकिंग बाय शेख सादिक. इफ यू हैड थ्रोन द बॉल परहैप्स कुड हैव बीन अ फ्यू ओवरथ्रोज. ही नोज दैट ही कांट गिव एक्स्ट्रा रन्स अवे. Total now on to 97. You could get a good spinning wicket, but then the bowlers have to use it. That's important. अगली गेंद बैकफुट पे गई और ऑन साइड में इस गेंद को खेला है. मिड विकेट की और गेंद जाती हुई 1 रन दौड़ के पूरा किया बल्लेबाज ने. 1 रनों के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 98 for 3. ऐसे कहते हैं कि फील्डर्स के हाथ में कुछ मैग्नेट है, बॉल उनके पास ही जा रही है, बॉल उनको बीट नहीं कर रही है. Yes, good thinking, very good thinking, but it's a very heavy outfield. Ball will not travel to the boundary. Very heavy outfield. Get 2 runs only. And that's the 100 up now. So the 100 up for the Dubai strikers, or Dubai RHINOS, correction. They could have well been 120 or 125. Excellent bowling. Super fielding there. संदीप, इस उम्र में झुकना, बॉल को उठाना और एक ही एक्शन में फेंकना, इट्स नॉट इजी. बिल्कुल सही फरमाया वापस आपने, क्योंकि 50 प्लस क्रिकेट हम देख रहे हैं. फिटनेस अच्छा मेंटेन किया है सभी खिलाड़ियों ने. हर रोज प्रैक्टिस, हर रोज सराव, मेरे ख्याल से उनका तो होता ही होगा.
सराफा में जाके कचौरी खाना, जलेबी खाना। ये अभी हो रहा है, अभी नई जो पीढ़ियां है, नई पीढ़ी है, उनमें हम कई नए खिलाड़ी आप देखते हैं। गए सराफा एरिया में? ओ, खाने की एरिया है वो। So now after 17 overs, it is 101 for 3. Remember, 11 to bat, 13 to bowl. Must be a tough job for the captain to decide when do I get one fielder back. Runs not coming very easily, Sandeep. They want fours, they want sixes. We've got only 1 6 in the entire innings. Doesn't matter how they come. 2 leg byes. A single correction. Single takes the total on to 102 for 3. That's big. That's huge. Will clear the fence. One drop and into the fence for 4. Runs have to come, Sandeep, and they've got to come big at this stage. हम हमेशा कहते हैं कि वी शेप में खेलना होगा और सही इस्तेमाल किया बल्ले का भी और कदमों का, और 4 रन हासिल किए बल्लेबाज ने। बढ़िया स्ट्रोक। वापस उसी दिशा में गेंद को खेला है, गेंद हवा में और ये कैच लपक लिया, विकेट का पतन। Wonderful catch there. These catches are not easy to take. Remember, they come from the sky, then they drop down, the ball starts twirling, the ball starts spinning, and that certainly is a wonderful catch. He's got a little bit of trouble. His ankle seems to be bothering him there. But what a catch. But Sandeep थोड़ा सा तकलीफ में दिख रहे हैं, एंकल शायद ट्विस्ट किया उन्होंने. I can see him hobbling, but in spite of that, he took that catch. Injury is the last thing that we want in this game. So Sohail taking up a beautiful catch there. हाँ, सोहेल मसूद इज आई थिंक बेस्ट फील्डर. पहले यहाँ पे कुछ देर पहले हमारे कमेंट्री बॉक्स के लेफ्ट साइड में बैठे थे, कैप्टन ने उनको बुलाया. अच्छे फील्डर होने के कारण उनको मिड विकेट और काऊ कॉर्नर की एरिया में तैनात किया गया. और देखिए जो सोच थी कप्तान की, वो बढ़िया सोच थी. बल्लेबाज ने उसी जगह पे गेंद को खेला था, काफी काल गेंद हवा में थी और अच्छा कैच लपक लिया फील्डर सोहेल मसूद ने. लेकिन एंकल थोड़ा सा ट्विस्ट किया लग रहा है. मैसियर उनको एस्कॉर्ट करके वापस ले आ रही है. बट यस, व्हाट अ कैच, ब्यूटीफुल कैच. Batsman name? So Biju Nair is the new batsman. The total on 106 for 4. Wonderful catch there. Wonderful catch. I hope you're not in trouble. You are in safe hands. I'm sure the Massiers do such a wonderful job. A wide at a wrong time of the day for the bowling side. Ice pack. The magic spray, as they call it, might come out. Oh, that's a beauty. That's a wonderful stroke there. Huge. The maximum. The maximum. What a time for this stroke to be played by the newcomer Biju Nair. What the stroke, dancing down the track, charge the ball over the wide of long off area and get a 6 run. Biggie. Get them, get them. I'm sure the two batsmen will saying, wonderful running between the wickets. Take the first, put the pressure on the fielder, pick up the second. 115 for 4. Runs coming by the thick now. That's brilliant. One drop into the fence he goes.
This is a frightfully expensive over. 12 runs so far. And Biju Nair, where was he all this while? क्यों छुपा के रखा था इसे? लेकिन काफी एक्सपेंसिव रहे गेंदबाज इस ओवर में. टीम का स्कोर अगर देखा जाए आफ्टर 18 119. बढ़िया क्रिकेट अब तक हमने देखा है. 18 ओवर के बाद 119 पर 3 4. So 12 deliveries to go, which means 2 overs, and which is what I said, at 119 with the score, in 2 overs, if you get 16 or even more, you can surely finish off on 135 plus. That should be a very competitive total. Over number 19, Sheikh Sadiq, his last over. He's bowled well to concede 19 runs in 3 overs. Super stroke. Absolutely super stroke. Inside out. Picks up 4 important runs. So Sandeep, why only 8 in the over? Even 10 is possible. क्रिकेटचं सौंदर्य काय असतं ते दाखवून दिलं या बॅटरने. बढ़िया स्ट्रोक केला है बल्लेबाज ने. टीम का स्कोर इस 4 रनों के साथ पहुंचा है 123 फॉर 4. Now 140 is possible. But these two batsmen have to stay there. Yes, another one. Another one finding the gap. Now the ball, Sandeep has suddenly decided, मैं फील्डर के पास नहीं जाऊंगी. गैप बिटवीन स्क्वेयरलिंग एंड मिड विकेट. वापस आड़े बल्ले से गेंद को खेला था बल्लेबाज ने. गैप ढूंढा, 4 रन हासिल किए. टीम का स्कोर 127 पर 4 विकेट. क्या फर्क पड़ता है कैसे खेलो, रन से मतलब है. This time can't beat the fielder. Wants the second. Good call. Excellent call. So 2 fours and a double. 10 runs in the over so far of 3 deliveries. And which is what I said. If they get 10 plus, 140 definitely is on the cards. That could be a very competitive total. दोनों में अच्छी सूझबूझ यहाँ पे हमें दिख रही है. और उसका नतीजा इन 3 गेंदों में हमने देखा है. बहुत सारे रन बनाते हुए बल्लेबाजी करने वाली टीम 129 रन 4 विकेट के नुकसान पर 19वां ओवर प्रगति पथ पर. स्क्वायर कट का स्ट्रोक खेलना चाहते थे. स्क्वायर कट खेला बल्लेबाज ने. 1 रन मिला. 1 रनों के साथ टीम का स्कोर वापस हम देखते हैं 130. बहुत ही अच्छी सोच थी बॉलर की. लास्ट मिनट पे बॉल चेक किया जब उसने देखा कि बैट्समैन बाहर आ रहा है. Yes, they are coming. The runs are coming. Anything pitched on the middle and leg stump or outside the leg stump is inviting trouble at this stage. Up now to 134. Remember, the 19th over is still in progress. आपने भविष्य देखा था कि 138 140 रन बनेंगे और मेरे ख्याल से अब ये सच होता होगा. 134 पर 4 विकेट. अभी भी इस पारी की गेंदें अगर देखी जाए तो 7 गेंदें शेष है. Could have been a wicket there, could have been. That was the last ball, the 19th over. 134, so 6 deliveries. 140 surely possible, but why 140? 145 could be.
6 deliveries, an average of even 2 per ball makes it 10 to 12, which is 145. We've seen some exhilarating cricket here in that first match between two wonderful sides. The central strikers from Indore and the Dubai RHINOS from Dubai. They've traveled from far and wide. 3 hour plus flying time from Dubai to Mumbai, and then a journey of over 3 hours here to Safale to play a wonderful contest. 34 by Mansoor, 20 by Jaslain, the captain Abbas 16, but Regimon is still there. Still a wonderful knock, and I'm sure the batting side wants him to be there till the last ball is bowled. He's not out on 31 of just 25 deliveries. And Biju Nair, who came in here, some wonderful hitting, 2 4s and a 6 and a 2. He's got his 16 in very quick time. आखिरी ओवर लेते हुए गेंदबाज चोपड़ा, दिनेश चोपड़ा। दिनेश शर्मा को हमने देखा, अब दिनेश चोपड़ा को भी हम देख रहे हैं। सामने बल्लेबाज रिची मोहन, हट्टे कट्टे बल्लेबाज है, क्रॉस बैट से खेलना चाहते थे, अपील की है और पहली विकेट ऐसी है लेग बिफोर द विकेट। गेंद अगर देखी जाए तो मिडल स्टंप की ओर जाती हुई गेंद थी, थोड़ी सी नीचे रही थी गेंद, और अपील की गेंदबाज ने विकेट का पतन होता हुआ और एक बल्लेबाज पैवेलियन की ओर लौटते हुए। क्या कहना चाहोगे वाघेला सर इस विकेट के बारे में? Well, nothing to be blamed for the batsman there, because surely this was the time where the attack had to come, and when you attack sometimes you lose a wicket. So I don't think the batsman has got to be blamed for that stroke that he played. The ball kept low, straightened up a bit and got him plumb in front. But he's played his part to get 31 of just 26 with 4 fours. 5 balls remaining now, and looks as if that 140 might just be possible. 1774 में अगर देखा जाए तो इस नियमावली को क्रिकेट के अंदर समाविष्ट किया गया, लेग बिफोर द विकेट। उसके बाद में अगर ओडीआई क्रिकेट में देखा जाए तो वसीम अकरम, जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए 92 विकेट हासिल किए हैं। अनिल कुंबले टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले गेंदबाज थे, जो लेग बिफोर द विकेट में 139 विकेट उन्होंने लेग बिफोर द विकेट से लिए हैं। अभी भी अच्छी गेंदबाजी इस गेंदबाज द्वारा, और स्लॉग ओवर में ये गेंदबाजी। Dinesh Chopra had bowled the first over and he's now bowling the 20th over. Captain has plenty of confidence. This is his 4th over. He has conceded only 15 runs, and this of course was 1. Will get only a single. The fielding side won't mind that. Now they get a second because of a slight misfield. Good fielding there otherwise in the deep to take the total on to 136 for 5. 4 to go. How much will they get? Ashish is the new batsman. Single again. The fielding side just wouldn't mind a single. 137 for 5. आखिरी ओवर में गेंदबाज अच्छी गेंदबाजी करते हुए 3 गेंदों में अब तक 3 रन खर्च किए इस गेंदबाज ने।
ये कहा जाए तो स्लॉग ओवर कहा जाता है आखिरी ओवर को, और अभी भी 3 गेंदें शेष है। क्या एक दो बड़े स्ट्रोक हमें देखने मिलेंगे यहाँ पे? That's what the batting side wants, but that's not what the fielding side wants to give away. Yes, well bowled. In the block hole, wants a second. Take a second. What do you lose? At the most, you lose a wicket. Nothing short of that. But you get that extra run, remember. 138 for 5. 2 to go. The field up there, and rightfully so. They don't mind giving a single away. That's big. That's big. If you bowl a full toss, Sandeep, if you bowl a full toss, batsman says, मुझे तो तोहफा मिल गया है. फुल टॉस गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक बल्लेबाज ने खेला और 6 रन हासिल किए मैक्सिमम. इतनी अच्छी बॉलिंग करने के बाद एक फुल टॉस. देखिए कितने गेम में फर्क पड़ता है. 4 अच्छे गेंद और एक खराब. 144 now for 5. Good score. Well, it was between the keeper and the bowler. Single to finish the innings at 145 for 5, which means that the central strikers need 146 for a possible victory. मेरे को अब ऐसा लग रहा है कि आपको बल्लेबाजी करने वाली टीम ने कहा था कि हम 145 रन बनाएंगे, उनके हिसाब से वो चले 145 रन्स ऑन द बोर्ड आफ्टर 20 ओवर्स एंड 146 रन्स रिक्वायर्ड टू विन. क्या कहना चाहोगे सर? कुछ कहा था बल्लेबाजी करने वाली टीम ने आपको? देखिए वो मैं बाद में आपको शाम को बताऊंगा. So anyway, 146 for victory for the central strikers. We'll take a break and we'll come back at the start of the next innings. मीडियम पेसर को नहीं, लेकिन स्पिनर को अच्छी. सबके लिए दोनों को असिस्टेंस विकेट दोनों को असिस्टेंस मिला. अच्छे स्ट्रोक्स भी आ रहे हैं. Start time 130 end time 3-2. फर्स्ट मैच बॉला, फर्स्ट मैच बॉल 10 minutes. साइड में रख देना है. 10 minutes. 3:12 स्टार्ट ना. परफेक्ट टाइम पे जा रहा है. हाँ परफेक्ट एकदम. 5 के पहले हो जाएगा ना. होना ही. कितना बजे शुरू हुआ अपना? 1:30 बजे. 1:30 बजे शार्प 128 को ही पहला बॉल आ गया था. ये आया सबका नंबर. वो जमीन का है ना. जमीन इधर ही है. ला डाला दे. जस्ट उसका स्कैनर ले मुझे. टाइम क्योंकि है वो ना? ना मैंने कितना time डमी है? डाला है ना, टीम तो बाद में उसको नहीं दिखा तो प्रॉब्लम नहीं होगा. सर आपके साथ में फोटो खींचना चाहता हूँ. इधर चलो टॉस बॉक्स की तरफ. माइक लेते हैं, माइक साथ में. लकी धवन को ही बोलना पड़ेगा. लकी हाँ
वेलकम टू कमेंट्री बॉक्स। फिलहाल दूसरे इनिंग के लिए अभी थोड़ी देर, कुछ देर में दूसरी इनिंग स्टार्ट हो जाएगी। इससे पहले काफ़ी सारे समर्थक यहाँ पे मौजूद है। आई थिंक आप लोग, हाँ तो उनसे ही पहले बात करते हैं। सेंट्रल स्ट्राइकर, आप फिलहाल आपकी टीम कौन से? Central striker. Yeah. पसंदीदा खिलाड़ी कौन सा है आपके टीम का? My husband, Sukhdev Singh. He is a good player, all-rounder, and I wish him good luck. He should start very nicely and ended up. उनकी कौन से ऐसे बातें या कौन से ऐसी हरकत आपको अच्छी नहीं लगती है पूरे लाइफ में अब तक? ऐसा तो कुछ है नहीं, बस यही है कि वो ज़िद्दी बहुत हैं। उनके मन में एक बार आ गया कि मुझे खेलना है और मैं खेल के रहूँगा, एंड ही डिड दैट। जितना अभी तक मैचेस खेले हैं, जो उनका टारगेट था, ही डिड इट। उनकी पहली पसंद आप हो या क्रिकेट? हेलो। पहले मैं थी, अब वो क्रिकेट हो गया, मेरी सौतन बन गई है। क्या ये 146 रनों का जो चेस है वो आपकी टीम कर पाएगी? वी विल, यस वी विल। मतलब करेगी। मैडम आप सपोर्टिंग स्टाफ है, शायद आपका भी कोई ना कोई इस मैच में खेलता होगा। कौन है इस मैच में? मेरा हस्बैंड। तो आप पूरी टीम ये जीत पाएगी ये मुकाबला, पहला मैच? 100% श्योर जीतेंगे ही। यहाँ पे आने के बाद आपको कैसा लगा? ये क्रिकेट ग्राउंड है, ये ऑर्गेनाइजर टीम है, कैसा लगता है? वेरी नाइस, एक्सलेंट। मैडम आपका नाम? संगीता शर्मा। या मतलब शर्मा जी की आप मिसेस हो। शर्मा जी एक अच्छे ऑलराउंडर में है, और आपके लाइफ में भी ऑलराउंडर है। जी बिल्कुल। आपके टीम के बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे, या उनको ऊर्जा आने के लिए क्या बताओगे? बस मेरी टीम का जोश बिल्कुल हाई है और मेरी टीम 100% जीतेगी। इस टीम के अलावा आपका पसंदीदा क्रिकेटर कौन है? पसंदीदा क्रिकेटर तो अभी MS धोनी और विराट कोहली, अभी तो लेटेस्ट। थैंक्स। आपकी टीम जीत जाए, यही मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहूंगा। या बैक टू कमेंट्री बॉक्स। मिलिंद सर इज देयर। So the innings of the Indore team now starts. आज एक चीज तो पक्का है कि ऑर्गेनाइजर्स को अलग अलग रूम लेने पड़ेंगे वहां पर। आपने तो झगड़ा लगा के आ गए यहाँ पर। So yes, 146 required for a possible victory. So Biju Nair is the bowler, on strike is the captain. So wonderful. Yes, great movement there. That's what the fielding side, the Dubai Rhinos want. They are defending 146. Manoj on strike. Once again, the movement. Wonder whether the fielding side would do to keep two slips to start off with, because the bowler is getting a fair bit of movement in the two deliveries that we've seen. But nevertheless, those are the men in the center who will decide what they need to do. The first run yet to come on board. Better again, in the groove. We haven't seen a maiden over bowled in the first innings. That's the first essay by the Central Strikers, the Indore team.
और ब्यूटी। संदीप, इतनी अच्छी बॉलिंग हमने पहले ओवर में देखी है, वैसे ही पहली ओवर हमने देखी थी जो इंदौर साइड ने डाली थी। अच्छी शुरुआत दोनों साइड्स के लिए। अच्छी शुरुआत तो हुई है दोनों साइड के लिए। 4 गेंदों के बाद एक ही रन। ओ क्या मोमेंट है, यहां पे तो 4 रन मिलेंगे। लकी चौका। उसके लिए मैं कह रहा था फर्स्ट स्लिप अगर रखें तो शायद कुछ फर्क पड़ सकता था, लेकिन हाइंडसाइट पे हमने ऐसा करना चाहिए था, वो नहीं चलता है। So that's the end of the first over in which that lucky 4 or the streaky 4 came for the central strikers from Indore. No, it is not the end, is it? One to go, correction. विकेट कीपर तो हेड रहता है, मतलब सिर रहता है कौन से भी मैच में। उनको पता रहता है कि अभी कहाँ फील्डर लगाए हम। अभी फर्स्ट स्लिप में एक फील्डर वहां पे तैनात किया गया है। गेंदबाज तैयार, पिजुनायर, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर निकलती गेंद, और यहां पे ओवर की समाप्ति। पहले ओवर के बाद टीम का स्कोर 5 रन। So getting a fielder on hindsight after a stroke has gone to that position is of no use. You know, a good thinker would get a position in advance. बैट्समैन वापस वो स्ट्रोक खेलने वाला नहीं है। अभी देखना है क्या रणनीति रहेगी दूसरे ओवर में। दोनों एंड से यहाँ पे गेंदबाजी हो रही है। पहले इनिंग में जो स्पिनर्स थे उनको अच्छी सहायता मिली विकेट की। 5 रन पहले ओवर के बाद टीम का स्कोर। अभी दूसरा ओवर, आशीष रेडीज, नो बॉलर। जीत के लिए 147 रन बनाने हैं। काफी मशक्कत करनी पड़ेगी यहाँ पे, काफी मेहनत करनी पड़ेगी बल्लेबाजी करने वाली टीम को, ताकि यहाँ पे आसानी से ये रन बना नहीं सकते बल्लेबाजी करने वाली टीम। 146 the target. They got 5 on board. The asking run rate was a little over 7 when we started off. They got 5 in the first over. So the batting side, which is the central strikers, will have to keep a close watch, a close eye on the average that they get per over from here on. Anything short of 6 perhaps could only mount the run rate as they approach the halfway mark. I remember the Dubai team had got an average of 5.5 at the halfway mark. That's 10 overs. That's the last thing that the captain and the team wants from a bowler, Sandeep. You bowl a wide, you concede an extra run, and you got to bowl an extra delivery. If you go back to the Indore side, they did not concede many extras. They just conceded 5 extras. That's it. पहले इनिंग में केवल 5 रन एक्स्ट्रा हमने आते हुए देखे थे। इस इनिंग में गेंदबाज द्वारा खराब शुरुआत। अभी देखना है लय पकड़ पाते हैं कि नहीं। ओ आड़े बैट से खेलना चाहते थे बल्लेबाज। ये अच्छी गेंद थी, टिप्पा अगर देखा जाए तो अच्छा रखा था गुडलेन क्षेत्र की ओवर में। Very unorthodox bowling action, but we've seen bowlers all over the world with unorthodox action who have always regaled you in the bowling department.
वापस खराब गेंद थी। सपोर्टर्स कह रहे, प्लेयर्स कह रहे कि एक्शन अगर देखी जाए तो टॉम मूडी। Absolutely. Yes, I was about to say that. Reminds me of the tall Tom Moody. भाई इस बॉलर का मूड कुछ अच्छा नहीं लग रहा है अभी. So on the board is 8 without a wicket. We are in the second over. शॉर्ट गेंद थी, इस गेंद को खेला है कवर्स के क्षेत्र में। मिड ऑफ खराब थ्रो और इसका नतीजा ये मिलेंगे बल्लेबाजी करने वाली टीम को 5 रन। Why did he do that? Everything was going right. They just conceded a few runs and now you added to the plight. 146, remember, they got all the runs in their bag, Sandeep. And after all that they have done, when you concede runs of these nature, your 146 does not look good then. इससे बल्लेबाज का आत्मविश्वास यहाँ पे बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा यहाँ पे। दिवाली खत्म हो गई है, फिर भी तोहफे दिए जा रहे हैं। शायद क्रिसमस का इंतजार कर रहे हैं। लॉन्ग सेकेंड ओवर एंड देयर ही गोस। दैट्स बिग, दैट्स मैसिव। Well, we saw a similar one playing inside out, which was a 6 earlier on, and this by far not easy to play that stroke at this age. वो सबसे सुरक्षित जगह रहती है वो मेरे ख्याल से, लेकिन वो उतना इजी भी नहीं है। 6 रन हासिल किए बल्लेबाज ने। टीम का स्कोर अभी आगे बढ़ता हुआ 19 पर नो लॉस। इतना आसानी से लिफ्ट किया उसने, एक स्टेप डाउन द विकेट लाइक अ बैले डांसर, लाइक अ जिमनास्ट। That's a good field, taking the sting. Could have been a 4 for sure. I did not taken the sting out of that ball. Up now to 20, and the second over is still not complete. So they're averaging 10 per over, which is what they are comfortably sailing at. The mantra, Sandeep, is very simple. Take it easy from here on. You're averaging 10 per over. No hurry required. Make sure that you continue to maintain that 7 or 8 run average. Don't allow it to drop below that. 2 overs gone, 20 without a wicket. कंसंट्रेशन काफी अच्छा है इन दोनों बल्लेबाजों का। एक बल्लेबाज जो रन बना रहे हैं, तो एक बल्लेबाज ने सोचना चाहिए कि हम उसको सपोर्ट करें, और वही हो रहा है मैदान के अंदर। 2 ओवर के बाद टीम का स्कोर 20 फॉर नो लॉस। क्या सुंदरता है इस विकेट की, इस ग्राउंड की। ग्रासिव आउटफील्ड और अच्छा नजारा हम देख सकते हैं इस मैदान का। ओमटेक्स ICWC क्रिकेट इंस्टीट्यूट प्रेजेंट 50+ चैलेंजर्स ट्रॉफी। काफी सारी खिलाड़ी अब तक बाहर जा चुके हैं। काफी सारे खिलाड़ी या इस एकेडमी से निखर के बाहर आए हैं, उनकी भी चर्चा हम करेंगे। राजेश सुतार बढ़िया खिलाड़ी, मुंबई के लिए काफी क्रिकेट मैच खेल चुके हैं। उन्होंने भी उनको भी हम कल इस मैदान पे इन एक्शन में देखेंगे।
नए गेंदबाज गेंदबाजी का छोर संभालते हुए, ओ सर सीधे बल्ले से खेला है, गेंद मिड ऑफ की ओर जाती हुई, 1 रन दौड़ के पूरा किया इस बल्लेबाज ने। टीम का स्कोर 21 रन। So surely but steadily, Indore piling up the runs. Runs coming by the thick for the central strikers. They know that they have a mammoth task in front of them, but they have done well to keep their eye on the scoring pattern. Don't allow it to drop below 7. A packed offside field. 5 inside the circle. In fact, 6 inside the circle. And that's the area they need to work on. They know that there are only 2 fielders on the onside, and they have to capitalize. In fact, the third one is right on the fence. Ambe, the bowler, comes from the wonderful state of Goa. So yes, he's done his part of the job. What he needs to do is to bowl to that field of 6 on the offside. Make sure you don't pitch it on the middle and leg stump at all. Yes, that's better. So 3 overs gone, and after 3, chasing 146. The strikers are 25 without a wicket. Only 5 run considered Mr. Ambe Parvatkar. He is a national cricketer. बम्बई के लिए खेल चुके हैं, बोलान डिस्ट्रिक्ट के लिए भी खेल चुके हैं, गोवा एंड यूएई टीम के लिए भी वो खेल चुके हैं। 18 साल की महज 18 साल की उम्र में उनको मौका मिला था बम्बई टीम में, लेकिन उनको खेलने का मौका नहीं मिला था, गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिला था, बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला था। फिर बारी आई जब वो 37 साल के हो गए, उम्र के 37 साल में उनको मौका मिला गोवा के टीम में, और गोवा वर्सेस हिमाचल उस टीम के अगेंस्ट वो खेल चुके। ऐसे खिलाड़ी है मिस्टर अंबे परवटकर, जिनके अभी गेंदबाजी हमने देखी। सामने वाली छोर से गेंदबाजी का छोर संभालते हुए नए गेंदबाज बिशु नायर। ओह व्हाट बॉल, अच्छी गेंद थी ये, बल्लेबाज इस गेंद को पढ़ नहीं पाए। डॉट बॉल। टीम का स्कोर अभी रुका हुआ। पहले 2 ओवर में हमने देखे थे कि 20 रन आ चुके थे। तीसरा ओवर काफी बढ़िया था गेंदबाजी करने वाले टीम की ओर से। शॉर्ट गेंद थी लेकिन सीधे बल्ले से खेला है लॉन्ग ऑन की तरफ। 1 ही रन मिलेगा बल्लेबाज को। टीम का स्कोर 26 रन। Heavy outfield which does not push the ball to the fence very easily. So one of the ways that these batsmen have to get the force is by lifting it and get it one plonk into the grass and then out. We've just seen 2 sixes in this match so far. Very unusual for a T20 game. The body balance not there. This surely looks to be a competitive match between the two sides. Sandeep, which side picks up 2 points?
That's going to be the crucial factor. Remember, you win your first match on the opening day, your tail is up. You go into the second match brimming with confidence. The side which has lost knows that they've got to put in an extra effort to win. Up now to 27 without a wicket. वापस सीधे बल्ले से खेला था बल्लेबाज ने। काफी अहम रहता है पहला मुकाबला। अगर पहला मुकाबला जीत जाए तो आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस अपना बढ़ जाता है, जैसे आपने अभी कहा और हमने पहले भी देखा है कई सारे मैचेस में। He's gone. He's gone. I didn't even have to look at the umpire's finger. He went down the wicket to say hello to the non-striker. Perhaps went to tell him, आज शाम को हम कौन से बीच पे जाएंगे. But the wicketkeeper was absolutely brilliant. We've seen both the wicketkeepers. A little bit of this wicketkeeper सिर्फ चौथी ओवर चालू है, लेकिन पहले की इनिंग्स में विकेटकीपर अब जो हमने विकेटकीपिंग देखी है एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल. हाँ, कई सारे समर्थक यहाँ पे है, उनको याद आई होगी महेंद्र सिंह धोनी की. जैसे कि संगीता मैडम ने कहा था कि उनका पसंदीदा खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली है. और यहाँ पे एक विकेट गिरती हुई बल्लेबाजी करने वाली टीम की चेसिंग हो रही है. जैसे कि चेसिंग के लिए अब तक 146 रन्स बनाने हैं. टीम का अभी का स्कोर अगर देखा जाए तो 28 रन. So the captain comes back. He had that huge responsibility on his shoulders of staying there. But some good bowling, stepping out unnecessarily, I thought. So they lose the first wicket of their captain, Suki, with the total then on 28 for 1. The Dubai Rhinos had lost their first wicket with a total on 44. The new batsman at the fall of the captain's wicket is Akshay Srivastav. चाय कॉफी, तो कॉफी लेंगे चाय लेंगे. रेडी, आशीष रेडी. I like this. There are orders being given for tea and coffee around. So 28 for 1, and at a similar stage, the fielding side, that's the Dubai Rhinos, were 44 when they lost their first wicket. So that wicket perhaps will put the brakes, unless of course the central strikers have other ideas. So the fourth bowler, Ashish Reddy, in fact the third bowler, he'd send down the second over of the innings. So Sandeep, there will be plenty of instructions which will now go from here. ऐसे खेलना, वैसे खेलना, देख के दौड़ना, मेरे ख्याल से जो नहीं दौड़ना, मत दौड़ना. मेरे ख्याल से जो बल्लेबाजों के ऊपर प्रेशर कम रहता है, जो पैवेलियन में जो खिलाड़ी रहते हैं उनके ऊपर प्रेशर ज्यादा रहता है. Sandeep, added to the entire thing that you just mentioned, ड्राइंग रूम में लेडीज एडवाइस करती है, तो शायद वो तीन भी यहाँ पर एडवाइस करेगी. बिल्कुल, क्यों नहीं. यहाँ पे है काफ़ी सारे सपोर्टर्स है, लेडीज है जो सपोर्ट्स कर रहे हैं अपने अपने टीम के लिए.
But I love the passion. I love the passion of the ladies now with T20 becoming so popular. Oh, that's a wonderful one. Can't beat the fielder. Packed field there. 3+2, 5 fielders on the offside. You can't pierce that field. It's like a wall, the Great Wall of China, or the Himalayas to be particular. Why talk of the Great Wall of China? हमारे Himalayas है, very strong. Good over, excellent keeping there. Excellent keeping once again. You know, for a 50+ boy, Sandeep, to stand up to a bowler, sending down the ball at a few hundred kilometers an hour is not easy at all. Old is gold. इतनी आईसाइट लगती है. बहुत सारे मैचेस का अनुभव है ये. नंबर 50, जर्सी नंबर 50, मिस्टर आशीष रेडिस. फुल टॉस बॉल मिडॉन की तरफ खेला. इस गेंद को एक ही रन दौड़ के पूरा किया. फील्डर वहां पे तैनात थे. एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 पर 1 विकेट. अभी तक ये ओवर समाप्त हुआ नहीं है. So 20 runs in the first 2 overs, and after that the scoring pattern has dipped considerably after the fall of the captain's wicket. End of the over. So 5 overs, 31. So from 10 per over they have now dropped down to 6.1 per over. फर्स्ट इनिंग में हमने देखा 5 ओवर की समाप्ति के बाद 30 रन बने थे. अभी सेकंड इनिंग में हम जा रहे हैं, 5 ओवर के बाद 31 रन बने हैं. मतलब एवरेज थोड़ा सा मिलता जुलता है. लेकिन एक विकेट बैटिंग साइड की गई है, जो दुबई राइनोस की विकेट गई नहीं थी. वो एक प्लस पॉइंट है फील्डिंग करने वाले टीम के पास. गेंदबाज बिशु नायर वापस अपने गेंद ओवर की शुरुआत करते हुए 30 यार्ड सर्कल के बाहर लॉन्ग ऑन, और ये हवा में गेंद थी. स्वीपर कवर की तरफ, पॉइंट की तरफ गेंद जाती हुई, फॉरवर्ड पॉइंट की तरफ गेंद जाती हुई. 2 रन दौड़ के पूरे किए बल्लेबाजों ने. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स. 2 रनों के साथ टीम का स्कोर पहुंचा है 33 पर 33 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट. Lucky there that the ball did not go straight to hand. Else could have been a second disaster. That's wonderful. But there is a fielder. इतनी मेहनत करने के बाद he's got only 1 run, making sure that he hits a stroke short of the fielder and not straight to him, takes the total on to 34 for 1. अगर रन नहीं बनते हैं तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा. अभी बल्लेबाज देख रहे हैं कि कहां पे फील्डर लगाए हैं. ओ अच्छी गेंद थी, रन लेने की कोशिश नहीं की वहां पे बल्लेबाजों ने. टीम का स्कोर रुका हुआ 34, 34 पर 1 विकेट. Sandeep, never try to stop a ball by your shoes. I'm sure the fielder knows that, although that was a wide now. The earlier stroke, the fielder should well know what happened to Hardik Pandya. Tried to stop the ball with his foot, twisted his ankle, and he's lost not only the World Cup, but perhaps he's out for some more weeks or even months.
So the last thing that any fielder should ever try to do is to try to stop the ball by his shoes. हाँ, बहुत सारे खिलाड़ियों को क्रिकेट की जो नियमावली है उनको अभ्यास रहता है और मालूम रहता है। फुल टॉस करके इस गेंद को खेला था, फ्लिक किया है इस गेंद को मिड विकेट की क्षेत्र में, एक ही रन दौड़ के पूरा किया बल्लेबाज ने। So yes, runs coming only by the singles after a blustering start that they had when they conceded 20 runs of the first 2 overs, now dropping down. And however much you try to attack, the ball again seems to be going straight to the fielder. End of the over. And that is the end of 6 overs. After 6, it's 37 for 1. अभी देखा जाए तो पहले इनिंग में भी पावर प्ले के समाप्ति में 37 रन देखे थे हमने और दूसरे इनिंग में भी हमने 37 रन देखे हैं। 6 ओवर के बाद टीम का स्कोर 37 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। So although the current batting side has dropped their run rate, there's no worries there. The only worry is that they have lost the captain. But short of that, both the teams 37 at the end of 6 overs. But also remember, Sandeep, that the Dubai RHINOS got the bulk of their runs in the last 6 or 7 overs, particularly the last 2 overs. So if the Indore team is prepared to do that, then there's no worry. But why leave it to the end? Why get the pressure on your shoulders? Bowler's name? Looking at a bowling change with Rajesh Thadani now from our side. He likes number 13. I'm sure that must be a lucky number for Rajesh Thadani. Nearly there, nearly there. Sandeep, I just mentioned that Rajesh Thadani has got number 13 as a lucky number. And of the very first ball, he nearly got the wicket there. The second wicket of the strikers. बेहतरीन खिलाड़ी है राजेश तडानी। गेंदबाजी का छोर संभालते हुए अपने पहले ओवर की शुरुआत करते हुए पावर प्ले के बाद ये ओवर हम देख रहे हैं। स्लोवर वन, फ्लाइट ज्यादा दी थी इस गेंद को, यहां पे डिफेंस किया बल्लेबाज ने। देखो संदीप, सिंपल प्रिंसिपल है, बॉल को छोड़ो, it's slow off the wicket. See, third time again, except that this was a full toss, not able to capitalize. So all that Rajesh Sandeep is doing is that he is only tossing the ball up. He's doing nothing exceptional. Just bowl on off and middle. There you are. Surely couldn't have gone to the ball, so waited for it to come to you. 4 deliveries, only 2 runs. He's doing his part of the job. देखना इन दो गेंदों में क्या कुछ होता है। वापस अलोंग द कारपेट इस गेंद को खिलाता, एक ही रन दौड़ के पूरा किया इस बल्लेबाजों ने। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 40 रन। They won't mind the singles.
Excellent over. Only singles, 4 of them conceded. And 41 it is for 1 after 7 overs. So 7, 6 are 42. They are a shade short of an average or a run rate of 6 per over. What is the run rate that they required? A little over 7. 146, so a little over 7 is what the run rate required was at the start of this innings. रिक्वायर्ड रन रेट अगर देखा जाए सर जी तो 8.08 का रिक्वायर्ड रन रेट है अभी. 7 ओवर के बाद 42 रन, 41 रन, 41 for the loss of 1 wicket after 7 over. Eight runs is always manageable. Should get a second? No. The ball this time was speeding to the fielder, making sure that the second was not on. 42 for 1. Sandeep, an average of 8 is perfect. The moment it starts going up to 9 or 10, which means you got to get 1 for sure. Great work. Wonderful work there. Or super keeping. Absolutely super keeping. एमएस भी ऐसे खड़े रहते थे कभी कभी जब आप ही लोग करते थे. एमएस धोनी इज द परफेक्ट विकेट कीपर फॉर इंडिया. काफी गरीबों में अपना जो बचपन गुजारा था महेंद्र सिंह धोनी ने. बल्ला लेने के लिए भी उनके पास कभी कभी पैसे नहीं थे. पार्टी के लिए भी, दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए भी पैसे नहीं थे. लेकिन आज जो भी है सबके दिलों की धड़कन है एमएस धोनी. Excellent bowling. So the Dubai side is making sure that they are pushing the batsman to the hilt. They're making sure that the fours are difficult to come by. They are conceding a single here and there. This is what they want. This is what they want. This is what, oh God! Into the hand and then pops out. Wasn't easy, remember? Suraj aankh mein tha. These are not easy catches. Had he taken that, it would have been a super catch. कहा जाता है ना, पकड़ोगे कैच तो जीतोगे मैच. That was difficult. That was surely difficult. The supporters want a second to be taken. The two batsmen surely know what they need to do. यहाँ से कुछ कहना और विकेट पर कुछ करना वो अलग रहता है. कुछ अलग सोच रहेगी वहां पे बल्लेबाजों की. $44 for 1. Second time outside the off stump, in fact wide outside the off stump, and the wicketkeeper once again brilliant. The bowler Sandeep must consider himself lucky that that was close to being called a wide, but some excellent wicket keeping that we've seen out there in the center. 8 overs gone, 44 for 1. आठ ओवर के बाद टीम का स्कोर
44 रन 1 विकेट के नुकसान पर। थोड़ा सा दबाव अभी भी है, वो दबाव से बाहर आना होगा बल्लेबाजी करने वाले टीम को, और वो कर सकती है। काफी सारे मैचेस उन्होंने अब तक खेले हैं और अपनी प्रतिभा दिखाई है। प्रतिभाशाली खिलाड़ी इस टीम में है। Rajesh Thadani conceded only 7 runs in the 2 overs. Correction, 4 runs in 2 overs. They want the second. Some excellent fielding. Surely a second could have been possible had they run the first very quickly. 45 for 1. 101 required now for a possible victory. वो कदमों का इस्तेमाल करते हुए मिड ऑन स्लो मिड ऑन की तरफ इस गेंद को खेला है। एक ही रन मिलेगा, 1 रनों से ही संतुष्ट होना पड़ रहा है इस समय बल्लेबाजों को। प्रयास तो चल रहा है कि बड़ा स्ट्रोक मिले। अगली गेंद फ्लाइट ज्यादा दी थी, अंतिम क्षणों में कट कर दिया फॉरवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में। रन लेने का कोई मौका नहीं यहां पे। Once again the fielder tried to stop the ball with his foot there. Never do it. Beaten, wonderful delivery. Floated it so well. Allowed the ball to spin away. And the batsman was beaten all ends up. Once again, wonderful keeping. The ball is coming very slow off the wicket now. Runs are difficult to come. I love this. I love this. This is the way life is. That's big. So 47 for 1 after 8 overs. 47 for 1 after 8. सैतालीस रन 1 विकेट के नुकसान पर 8 ओवर के बाद। अभी रिक्वायर रन रेट बढ़ चुका है, 9 का हो चुका है। हर एक ओवर में 9 रन बनाने पड़ेंगे बल्लेबाजी करने वाली टीम को। I heard someone say, संदीप, चौके और छक्के के ऊपर डिपेंड मत करो, 1 को 2 करो, 2 को 3 करो। So if you do that in an over, you get 6 or 7 easily. हाँ, चौके और छक्कों को लाइफ लाइन नहीं कहा जाता है, सिंगल्स डबल्स को लाइफ लाइन कहा जाता है क्रिकेट में, और उसका इस्तेमाल जरूर करें। स्ट्राइक रोटेट करेंगे तो अपने आप आत्मविश्वास उनका बढ़ जाएगा। And that was, I think that's been the difference so far between the Dubai side and the Indore side. The running between the wickets of the Dubai side was absolutely wonderful. They converted the ones into twos. The ball was traveling to the fielder. They put the pressure on the fielders. That's what Indore needs to do from here on. Yes, that's what they want. That's what they want. That's the way. There's a song in English, that's the way I like it. Wonder whether it was Bob Dylan or Neil Diamond who sang that song. But that's the way I like it. That 4 gets a bit of a relief on the batting side. Takes the total then on to so the central strikers now are on 51.
One more, but this time straight to a fielder. Doesn't matter, pick up a 4. Look for that occasional 4. Pick up a few singles. The fielding side might start wilting. ओ क्रॉस बैट से खेला है, ये 6 रन, छक्का। अभी इंजन गर्म हो गया बल्लेबाज का। इसको कहते हैं वेकअप कॉल। अलार्म अलार्म बजने लगा, वेकअप कॉल आ गया। 4, 6 and 1. Score moves on 59, 58, 58 for 1 in the 9th over. अगली गेंद, ये स्लो ओवर 1 थी, लेग ब्रेक किया था इस गेंद को, मिड विकेट की तरफ गेंद को खेला है, एक ही रन मिलेगा। अभी थोड़ा सा अच्छा स्कोर हुआ है। $59 for 1। वापस खेला है हार्डे बैट से मिड विकेट की ओर। काउ कॉर्नर पे वहां पे फील्डर था, एक ही रन मिलेगा इस बल्लेबाज को। अभी फिलहाल ये ओवर अच्छा घटा है बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए। 9 ओवर के बाद टीम का स्कोर 60 रन, 10 ओवर के बाद टीम का स्कोर 60 रन, 60 आफ्टर 10 ओवर्स। क्या कहना चाहोगे आप सर जी? अब मजा आएगी। Yes, play your game should be the mantra for the Indore side, the central strikers. Don't be too greedy. You got, what, 11 runs in that over? Or was it more? 13 in that over. So they've got what they wanted. Keep your eye on the scoring pattern. Make sure you don't lose your way. You lost only 1 wicket. There plenty of batting behind to get the runs. So you got to have a mixture of your eye on the scoring pattern and to keep your wicket intact. I still remember Sunday Ashok Mankad managed the Madhya Pradesh side many years ago. Sandeep Patil played for them, Madhya Pradesh. And then of course Chandrakant Pandit did a wonderful job for Madhya Pradesh. So yes, and then of course you go back to the time of the Holkars. You know, some big names. Chandu Sarote, C.K. Naidu, C.S. Naidu, Mushtaq Ali Saab, absolutely legend. Vijay Naidu, my friend from Indore. And of course, someone whom I did commentary with, Chandra Naidu, the daughter of C.K. They of course had some wonderful women cricketers. Single there to the team's total. Let's keep our eye on what's happening out here. The total then moves on to 63. And the stadium, I still remember the Nehru Stadium, the old stadium in which I close, very close, good running.
I still remember the Nehru Cup when Zimbabwe and India were tied, New Zealand were tied, both in the men and the women ODIs. Up now to 64 for 1. It's all happening out here at Safale. संदीप ऐसे लग रहा था कि इंदौर की साइड अपना रास्ता खो रही थी, लेकिन लास्ट 2 या 3 ओवर में व्हाट अ कमबैक दे हैव मेड. हाँ बिल्कुल कमबैक तो किया है बल्लेबाजी करने वाली टीम ने, और अच्छी बल्लेबाजी हो रही है, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी. इंदौर से काफी सारे खिलाड़ी आपने जिक्र किया उन खिलाड़ियों का. अभी देखा जाए तो वेंकटेश अय्यर, रजत पाटीदार, नमन ओझा, वो भी इंदौर से आते हैं. बॉलर्स के हेड के ऊपर से खेला था इस गेंद को, मिड ऑन और मिड ऑफ के बीच में गेंद आती हुई. एक ही रन मिलेगा इस गेंद पर. अभी ये ओवर अगर देखा जाए तो 6 बॉल में 6 सिंगल आ चुके हैं. ओवर की समाप्ति 11 ओवर के बाद. टीम का स्कोर 66 पर 1 विकेट. So they need 80 runs in 54 deliveries. It's a tough ask, but nothing is difficult. Remember, Sandeep, 41 workers were rescued from the Silkayar Lake tunnel yesterday in Uttarakhand. So nothing is impossible. मैं तो महाराष्ट्र में रहता हूँ, लेकिन मेरा पसंदीदा अगर स्टेट कौन सा है मेरे को पूछा गया तो मैं सच्ची दिल से कहता हूँ एमपी इज माय फेवरेट स्टेट. चौवन गेंदों में 80 रनों की आवश्यकता मैच जीतने के लिए. So the captain comes up to bowl, takes on the responsibility, Lucky Abbas, and straight away they get into the groove. The second was always on. Don't miss the second, because remember in the last over, that one run which you missed could be the crucial one that has left you behind. 82 required now of 53, is it? Up now to 68 for 1. Yes, pick up that single. Don't lose sight of it, because that could be the diamond towards the end. फिलहाल तो जितने गेंदे अगर डॉट जाती है उतना प्रेशर दबाव बढ़ जाएगा बल्लेबाजी करने वाली टीम पर. हर एक गेंद का सामना करें, 1 का 2 में, 2 का 3 में, ऐसा परिवर्तन हो जाए तो अच्छा रहेगा बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए. अभी अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा ज्यादा ब्रेक हुई थी गेंद, लेग ब्रेक का यहाँ पे लेग ब्रेक गेंदबाजी हो रही है गेंदबाज द्वारा. टीम का स्कोर 69. कदमों का इस्तेमाल करना चाहते थे बल्लेबाज, गेंद बल्ले पे ठीक से आई नहीं, फिर भी 1 रन मिला इस बल्लेबाज को. रिक्वायर्ड रन रेट हर एक गेंद पर बढ़ता हुआ हमें दिख रहा है. 70 फॉर 1. अक्षय श्रीवास्तव 24 गेंदों में 18 रन बनाकर खेल रहे, और 34 गेंदों में 38 रनों पे खेल रहे बल्लेबाज यहां पे मनोज. अहम पारी रहेगी इस बल्लेबाज की अगर ये मैच जिता देते हैं अपने टीम के लिए. ओ स्क्वायर कट करना चाहते थे इस गेंद को, ब्रेक हुई थी गेंद. रन बनाने का कोई मौका नहीं. इसी के साथ 12 ओवर समाप्त. 12 ओवर के बाद टीम का स्कोर 71 पर 1 विकेट. पानी चाहिए मेरे ख्याल से बल्लेबाज को.
Remember, one of the rules of this competition says that if any batsman retires during the innings in any form, can only come to bat after the fall of the 9th wicket. So they have capitalized on that. Sandeep, any batsman retired during the innings in any form can only come back after the fall of the 9th wicket. Yes, rules and regulation. That's a rule of this tournaments. Cool, retired हर्ट होके बल्लेबाज पैवलियन की तरफ आते हुए. बैट्समैन नेम न्यू बैटर इन नासिर अली. विकेट कीपर बल्लेबाज है नासिर अली. स्ट्राइक पे मनोज. बढ़िया बल्लेबाज है मनोज. अब तक अभिषित 39 रनों पे खेल रहे हैं. रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ चुका है. ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद को खेला है. कवर्स की क्षेत्र में एक ही रन मिला बल्लेबाज को. इक्का दुक्का रनों से अब तो काम नहीं चलेगा. बीच में बड़ा स्ट्रोक खेलना पड़ेगा बल्लेबाज को. Oh, absolutely, there's no doubt about it. A stage might come where the singles might not do them any good. And to get the fours and the sixes on this ground is not easy. संदीप सिक्सेस शायद आ सकते हैं, लेकिन आउटफील्ड इतनी हेवी है, ग्रास है, तो चौके मिलना थोड़ा सा मुश्किल है. छक्के शायद मिल सकता है, लेकिन उसके लिए भी आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी. मेहनत एक ऐसी सोने की चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे हमेशा खुले करती है. यहाँ पे भी मेहनत करनी होगी, वो चाहे गेंदबाज हो या बल्लेबाज हो. The Dubai RHINOS are certainly in with a fight here. How different a story it would have been. Yes, that's what's wanted. But as I said, a heavy outfield. Itni mehnat ki, all the hard work, and the strikers get only a single. Up now to 76 for 1. Asking rate mounting by the minute. Yes, do that, do that. Push the fielders. Don't lose sight of a single run, because every dot ball means you're pushing yourself back in the hunt for that victory. रिक्वायर्ड रन रेट अब तो बढ़ चुका है. 9.41 का रिक्वायर्ड रन रेट बन चुका है अभी इस टीम के लिए. वापस द्विधा स्थिति में बल्लेबाज गए. ऑर्थोडॉक्स लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद को खेला है. एक ही रन मिला बल्लेबाज को. मनोज यहां पे अच्छे बल्लेबाजी करते हुए 78 फॉर 1. 78 रन अब बन चुके हैं इस टीम के. इस ओवर की अभी आखिरी गेंद. मनोज इज प्लेइंग ऑन 42 और स्क्वायर कट करना चाहते थे इस गेंद को. अच्छी गेंद नीचे रहती हुई इस गेंद को पढ़ नहीं पाए बल्लेबाज. ओवर की समाप्ति 13 ओवर के बाद 78 पर 1 विकेट. अभी रिक्वायर्ड रन रेट अगर देखा जाए तो 7 ओवर में जीत के लिए अभी भी 68 रनों की आवश्यकता है. क्या बना पाएगी बल्लेबाजी करने वाली टीम ये रन? Well, एक कहावत है, never count your chickens till the eggs are hatched. तो my apologies for the vegetarians here, but वो कहते हैं कि nothing is impossible. आपको याद है मैक्सवेल ने क्या किया था? बिल्कुल. मेरे तो दो मैच मेरे दिमाग में बैठ चुके हैं मैक्सवेल के. So there are instances where the impossible has been made possible. Napoleon Bonaparte ने कहा, there is no word called impossible in my dictionary.
लकी अब्बास कप्तान गेंदबाजी का चोर संभालते हुए राउंड द विकेट से गेंद हवा में है, कैच हो सकता है और ले लिया कैच। राजेश तड़ानी अच्छे फील्डर है आउटफील्ड पे और not an अच्छा easy- कैच लपक लिया। That's not an easy catch. Remember, that's a position where the best fielders in the world are kept. याद होगा जॉन टी रोड्स, युवराज सिंह, बड़े बड़े नाम उस पोजीशन पे रहते हैं। अजहरुद्दीन रहता था वहाँ पर, तो क्योंकि बॉल डिप होती है बैकवर्ड पॉइंट स्लाइटली फाइन पे, वो आसान कैच बिल्कुल नहीं था। बॉल डिप होता है और ऊपर से सूरज भी आँख में आ रही है। सो एट अ वेरी क्रूशियल टाइम दे लॉस्ट एन इम्पॉर्टेंट विकेट। हाँ, अपने बेस्ट फील्डर का नाम यहाँ पे लिया। 2023 में उमटेक्स ICWC क्रिकेट इंस्टीट्यूट में यहाँ पे आए थे जॉन टी रोड्स, साउथ अफ्रीकन बेस्ट खिलाड़ी, बेस्ट फील्डर इन ऑल टाइम। गोवा में अब सेटल डाउन हो गए, इस गॉट हाउस इन गोवा। लेकिन उनको अपने भारत देश से इतना प्यार है कि अपने लड़की का नाम उन्होंने क्या रखा, इंडिया। Oh yes, it's a wonderful country. There's no question about it. Ajay Jain, the new batsman, well bowled. Got that bounce. Bowled it with venom. Got the punch and the speed. 40 चेंडूंमध्ये 68 धावांची गरज आहे। 40 गेंदों में 68 रनों की आवश्यकता। अच्छा स्ट्रोक, हवा में गेंद थी, पॉइंट क्षेत्र में गेंद जाती हुई 2 रन दौड़ के पूरे किए। इस बीच दोनों बल्लेबाज ने विकेट पर 2 रन के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 80। प्रॉब्लम संदीप वही है कि आउटफील्ड इतनी हैवी है, आप कितने भी जोर से मारो वो बॉल जाती है तेजी से, लेकिन फिर वहां जाके सुर हो जाती है। एक्सपीरियंस है। ओ डेविड बून स्टाइल से इस गेंद को खेला था बल्लेबाज ने, और देखना है कितने रन मिलेंगे यहाँ पे। 2 रन मिले हैं, शायद बल्ले पे कुछ हुआ है। 2 रन तो मिले इस गेंद पर इस बल्लेबाज को। टीम का स्कोर 82 पर 2 विकेट। So these 2 runs will continue to help the batting side inch forward. Wonder whether this match will go down to the wire. That should be clearly a wide. Good keeping again. Could have been a few byes, but the wide surely not what the fielding side wants to give away. That's big. That's big. That's what they want. That is surely what they want from here on. Get a few big blows. They'll be back in the match. I would still say that they're in the match. बढ़िया बेहतरीन स्ट्रोक खेला है। हवाई सफर सफल हुआ इस बल्लेबाज का। 6 होने के साथ अभी इस मैच में तो मजा आएगा। 89। Yes, that's what they want, but this time straight. That's the problem there again. Hard hitting, not clearing the fielder. Yes. The striker was, the non-striker was way out, and the wicketkeeper was not in the position. Otherwise, that could have been an important wicket in favor of the Rhinos. So at the end of that over, it's 91 now. Number of wickets in hand doesn't really matter. They got plenty of wickets in hand. Do they have the resolve? Do they have it in them to come closer? And then from there on take the fight into the
RHINOS camp. इस विकेट के बाद में क्या मैच में कमबैक कर पाएगी दुबई रेहिनोस की टीम, क्योंकि मनोज की विकेट अहम थी। टीम का स्कोर अगर देखा जाए तो इस समय पे 91, 14 ओवर के बाद 91 रन्स बन चुके हैं। 6 ओवर शेष है और 6 ओवर में जीत के लिए 55 रनों की आवश्यकता। रिक्वायर्ड रन रेट काफी बढ़ चुका है। So 36 deliveries and 52, is it? 36 deliveries, 52, 55. 36 deliveries, 55. Not a bad equation. Not a bad equation, I can tell you that. Possible, surely possible. Sandeep, 2 sixes and the entire match can change. यस, जो 2 छक्के जड़े हैं बल्लेबाज ने, उसके बाद में थोड़ा सा गेम पलटवार किया है। मतलब हमेशा हम क्रिकेट में कहा जाते हैं कि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। वैसा ही कुछ अभी इस मैच में हम देख रहे हैं इन 2 छक्कों के बाद। So 36 required, 55 required in 36. Repeat, 55 in 36. Yes, pick up every run, pick up every run. You lose 5 singles and the match could end with a difference of 5. So that's why it's important that you pick up every possible single. So 35 deliveries, 54 required. We'll try and keep track of the number of deliveries and the number of runs required. 35, 54 runs. Yes, that's good, that's good. They kept sight of the second run. लेकिन इस समय में आप कैच नहीं छोड़ सकते। बल्लेबाज जरूर अपना बल्ला बदलना चाहेंगे, लेकिन ये कैच जरूरी था। एक कैच छूट गया, उसका नतीजा हमने देखा। इस गेंद पे 2 रन मिले बल्लेबाजी करने वाले टीम पे, 3 रन मिले। टीम का स्कोर 95। जीत के लिए अभी भी 34 गेंदों में 51 रनों की आवश्यकता। 34 ball to goes and 51 runs required to win. Still close. That's a great stroke. That's a great stroke. Yes, he's done it. That's why I said, Sandeep, everything is possible. Everything is possible. Remember, A lazy fielding there. the fielders now slightly under pressure. The runs have started coming by the thick. Up now to 99 for 2. 47 required. Yes, you can't bowl full toss at this stage of the game, can you? I love the advice being given from the dugout out here. The 100 comes up. 101 to be precise. 45 required. 45 required in 32 ball. Good running between the wicket. दोनों बल्लेबाज अच्छी दौड़ लगाते हुए इस विकेट पर। Oh, beauty! That's a wonderful catch.
What a catch to be taken. That's again the fielder. The same fielder, in fact, who took the earlier catch at the same position on this side. And that's a big blow for the strikers. Super catch. Absolutely super catch. I think the catch of the day. अच्छा कैच वहां पे राजेश तड़ानी द्वारा। इस मैच में 2 कैच वो ले चुके हैं। अच्छे फील्डर है। अभी नए बल्लेबाज मैदान के अंदर दिनेश शर्मा। टीम का स्कोर 101 पर 2 विकेट। अभी भी 3 विकेट। अभी भी 31 गेंदें शेष है और 45 रनों की आवश्यकता। That catch looked so simple. I can assure you it was not easy. The ball was dropping down. It was dipping to him. It was also traveling at speed. But he's played a good knock there. Come in at a wrong time of the day. But that's a part of the game. All a part of some wonderful cricket that we watched on the opening day out here. This is match number 1 of the 4 days, 4 teams. And the first 2 teams, one of them will get 2 points, the other will look down to pick up their first 2 points tomorrow. The team which wins today will go back, sleep well. The second team will start thinking of plan B for tomorrow. 101 वर 3 विकेट ही धाव संख्या आहे सध्या बॅटिंग करणाऱ्या टीमची। 101 पर 3 विकेट। ऑफ स्टंप के बाहर निकलती हुई गेंद को छेड़ना चाहते थे, ऑन साइड में खेलना चाहते थे बल्लेबाज। अंदाज चूका बल्लेबाज का। ओवर की समाप्ति। और यहां पे अगर देखा जाए तो 15 ओवर के बाद टीम का स्कोर 101 पर 3 विकेट। अभी 5 ओवर शेष है, यानी कि 30 गेंदें शेष है और 30 गेंदों में जीत के लिए 45 रनों की जरूरत। I would honestly put this match at 55-45 in favor of the Rhinos. 55-45. फिर भी क्या लग रहा है आपको? कौन से, अगर आपको कहा जाए, किसी ने सवाल किया तो आप इन दोनों टीमों में से कौन से टीमों के साथ जाना चाहोगे? 55-45, that's what I said. 55 in favor of the Dubai side. But 45 is not a bad percentage, remember. Yeah. Is the bowler Biju Nair? If that's Biju Nair, has he completed 4 overs? No? Yes, there you are. Sandeep, didn't I tell you this match is not over? This match is just not over. Huge 6. That's what the batting side wanted. गेंद रही थी इन द स्काई और फील्डर कहता है टाटा बाय बाय। So up now to 107. ओहो, 2 इन रो। 2 छक्के जड़े हैं लगातार इस बल्लेबाज ने। अभी तो मेरे ख्याल से दबाव कम हो चुका है बल्लेबाजी करने वाले टीम पर।
What a match this is turning out to be. God, I said 55-45. It's now getting to be even now. This match is not over. This match is just not over. कुछ तो करना पड़ेगा यहाँ पे चमत्कार ही बचा सकता है अभी फील्डिंग करने वाली टीम को ऐसा लग रहा है मेरे को Well, this match is evenly poised. 27 गेंदों में 32 रनों की आवश्यकता है अभी टीम at का the- स्कोर 114 पर 3 विकेट Look at the transformation in the game. This is the way life is. It can change. It can change in a few seconds. Is there a cardiologist here today? This game is not for the faint-hearted, I can tell you that. Oh, it's all happening. What a game of cricket that we watched. When you travel all the way from Dubai, you don't come here to lose, and likewise when you come from Indore, you don't come here to lose. हाँ अभी भी हम अनुमान नहीं लगा सकते इस मैच का Sandip, a few years back, I used to chew my fingernails when a match was of this nature. I stopped chewing my fingernails during the COVID period, but fingernails I'm sure would be chewed out here by both the sides. अभी देखा जाए तो ये 3 गेंदे अच्छे डाल चुके हैं गेंदबाज विकेट की तलाश है अभी 1 विकेट काम बना सकता है फील्डिंग करने वाली टीम के लिए Lucky for the batting side. Surely this match is risen to dizzy heights. So there he goes, there he goes. There he goes. ये तो तोहफा था कबूल किया What a change in this match. आज शाम के फ्लाइट से इंदौर से जलेबी पक्का आएंगी. मैडम जी देखो कितने खुश हुए हैं क्योंकि उतनी अच्छी बल्लेबाजी भी हो रही है और सपोर्टिंग स्टाफ भी काफी अच्छा है 24 of 24. So Umpire 24 panel के, of 24. संजय जी पाटिल भी यहाँ पे उपस्थित होते हुए ट्वेंटी फोर क्या मैच आया है हमने सोचा भी नहीं था कि इतना आसान हो जाएगा बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए यह मैच इसके लिए सर जी वो कैच मेरे को याद आ रहा है जो मिड विकेट काउ कॉर्नर की जहां फील्ड है वहां पे छूट गया था दोस्त हर क्षेत्र में हर स्पोर्ट्स में मैंने देखा है टेनिस में रॉजर फेडरर डाउन 2-0 मैच पॉइंट he's come back to win in 5 sets. You see that in every sport. Cricket is not an exception. Never count, they say. A match as lost till the last ball is bowled, till the last run is scored. Even now, a few wickets can change the entire complexion of the game. How evenly this match is now poised. The strikers surely now riding high. At one stage we all thought that it was over for them. I had not given up hopes because I've seen strange things
happening in sports in these years. अभी फील्डिंग करने वाले टीम ने अपना एक्सपीरियंस सामने लाया है, क्योंकि काफ़ी सारा एक्सपीरियंस है, फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। हम भी गेंदबाजी का छोर संभालते हुए बॉलिंग ऑलराउंडर है ये खिलाड़ी। This is where, as you rightly said, experience might come into the fray, but all that the batsman has to do is to make sure that he strikes it well. From here on, Sandeep, it's simple equation, a single delivery. Even if you get 2 or 3 dot balls, it doesn't really matter, because I'm sure the fielding side always will have that 1 or 2 loose deliveries. काफ़ी सारी गलतियां सिंगल रन्स लेते हुए भी हो जाती है, फिर भी आसान नहीं रहेगा बल्लेबाजी करने वाली टीम को। 24 गेंदें 24 रन। अभी भी मैं कह सकता हूं कि मैच में कमबैक कर सकती है यहां पे दुबई की टीम। Oh yes, absolutely. There's no question about it. So yes, 23 of 23. That's the way this match stands. Strikers slightly having the edge. The Rhinos still in the game. Nothing is lost, I can tell you, for either of the two sides. It's neither here nor there. अभी भी दिल्ली बहुत दूर है. They'll take their own sweet time, and why not? Every second is precious. So that single again, 22 of 22, right? 22 of 22. All that you need to do, Sandeep, single, single and single. हाँ, सब कुछ करके देखा है फील्डिंग करने वाले टीम ने, लेकिन विकेट्स नहीं मिल रही है। मैं अभी भी कहूंगा कि विकेट अगर इस ओवर में गिरती है तो दबाव बनेगा बल्लेबाजी करने वाली इंदौर टीम पर। So 22 of 21. गोवा के लिए क्रिकेट खेल चुके स्वप्निल असनोडकर उनके टीम में थे। ये गेंदबाज अंबे, वो क्या कर रहे हैं वहां पे? फुटबॉल खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं? 2 रन यहां पे मिले बल्लेबाज को। अरे पानी पानी, वो लल्लू को पानी दे। जाओ जाओ जल्दी, अरे ले जा भाई। 20-20 मुकाबला भी 20-20 का है और 20 गेंदों में अभी 20 रन चाहिए। हमारे फिजियो वहां पे ग्राउंड के अंदर कुछ तो क्रैम्प्स आए हैं बल्लेबाज को। Yes, one can understand. Cramps sometimes get you as a result of the pressure, as a result of the tension as well. It's not only loss of fluids, it's hot, sunny, but remember, you also get these because of the stress and the pressure. But what a game this is turning out to be. Wonderful, wonderful game. It's sad, Sandeep, that one side has to lose the match. That's the problem about sports. You can only have one winner.
म्हणूनच फिटनेस किती महत्त्वाचा असतो. क्रॅम्स हे क्रिकेटमध्ये प्रत्येक खेळाडूला येतच असतात. आपण अनेक वेळा बघितलं आहेत. हमेशा हमने देखा है ऐसे कई बार देखा है. इसके लिए पानी की तो आवश्यकता रहती है बल्लेबाज को, फील्डर को, खिलाड़ी को. और दिन में मेरे ख्याल से इस समय 3 या 4 लीटर तक पानी पीना चाहिए हर एक खिलाड़ी ने. Yes, you lose so much of fluid in your body. Dehydration sets in. And that's why salts are important. It's not only water, it's salts. And that's why they say you must always take some rehydrants. Electral, for example, is one such contribution to dehydration not setting in. So you got to make sure your body is hydrated with salts at regular intervals. Also remember that you are no longer a young boy. Over 50, you tend to lose fluids or salts in your body very quickly. But I'm sure the batsman there is in good shape, under good care. We as commentators would never like to see an injury or a batsman or a batswoman coming back with an injury, because that's the last thing in sports that we'd like to see. यहाँ पे बेहतरीन खिलाड़ी है अजय चेन, जिन्होंने इस इनिंग में 4 छक्के जड़े हैं. गेंदबाजी करते हुए भी पहले इनिंग में अच्छे गेंदें डाली थी. बल्लेबाज को परेशान किया था, दुबई के बल्लेबाजों को परेशान किया था. और अभी यहाँ पे वही खिलाड़ी इंजूर्ड हुए हैं, क्रैम्प्स आए हैं. अजय चेन, अब तक का स्कोर अगर उनका देखा जाए तो 4 छक्के तो जड़ लिए हैं. 4 छक्कों के साथ 11 गेंदों में 35 रन बनाए हैं. इससे पहले बल्लेबाजी मेरे को पसंद आई बल्लेबाज मनोज की, जिन्होंने भी अच्छा स्कोर बनाया. 42 रन बनाए, उनमें 2 छक्के शामिल थे और 39 गेंदों में ये काम किया था इस बल्लेबाज ने. अंपायर भी अच्छा काम करते हुए इस टूर्नामेंट में मंदार चामरे, आदित्य राउत और हमारे स्कोरर कुशल गावड़े. और मैं तो इस मर्तबा भी कहता हूँ कि मैं भाग्यशाली हूँ. मेरे को मौका मिला है इंटरनेशनल कमेंटेटर मिलिंद वागले सर के साथ में कमेंट्री करने का. और सबको मैं बता दूँ, मैं हिंदी कभी कमेंट्री नहीं करता हूँ. यहाँ पे मेरे को पहला मौका दिया गया है नेशनल खिलाड़ी राजेश सुतार सर द्वारा. इससे पहले 2017 में डिसेबल नेशनल क्रिकेट मैच में कमेंट्री की थी और उससे पहले 2014 में भी डिसेबल नेशनल मैच में कमेंट्री की थी. लेकिन आज ये मौका मेरे को मिला, मैं भाग्यशाली हूँ. मिलिंद जी, सर जी, आप जैसा इंटरनेशनल कमेंटेटर हमारे साथ में हो तो और भी मज़ा आएगा. कुछ सीखने के लिए नया मिलता है. Well, thank you for the kind words. आज शाम को मिठाई जरूर दूंगा तुझे. So everything is ready now with the game to get underway. Oh, he's got those important runs. He's got those important runs at the right time, the wrong time of the day for the fielding side. They might run 4. They've run all 4. Surely the Dubai side needs to pick up their socks now or pull up their socks. So 16 runs required, just 16 of 19 deliveries, 16 of 19.
Now this is not what was wanted, but safe. Picking up two important runs. Very important runs. We now require 18 deliveries and 14 runs. 18 गेंदे शेष और 14 रनों की जरूरत। अभी तो काफी मुश्किल हो गया है ये मैच फील्डिंग करने वाले टीम को। एक टाइम हम सोच रहे थे कि ये रन आसानी से बनाने नहीं देगी फील्डिंग करने वाली टीम। मुझे अभी भी याद है 4:15 बजे मैंने कहा था 55-45 in favor of the Dubai side. And how quickly in half an hour the entire game has changed. ये तो आपका एक्सपीरियंस है सर जी, बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेस में आपने कमेंट्री की है, ओडीआई हो चाहे वो T20 इंटरनेशनल मैच हो या फिर टेस्ट क्रिकेट हो। How close this match is. Oh, it was. Not many gave the Indore side a chance, but some amazing comeback. This is what life teaches you. This is what life tells you, don't give up. This is what life tells you, that there's always a ray of hope. The sun has not set yet, remember. There's no darkness. It's still a clear evening, and a clear evening for the central strikers. Wonderful tactics. Singles will do all the runs that they need to get. In singles will do, because remember, the field is spread out. The moment the field comes in, the batsman will wield the long handle, and that is what is the worry for the Dubai Rhinos. डाउन द लेग वाइड बॉल का इशारा। टीम का स्कोर 134 पर 3 विकेट। अभी भी जीत के लिए 12 रनों की जरूरत। डिफेंस किया, बैकवर्ड डिफेंस किया इस गेंद को, क्योंकि आप जानते हैं कि हम इस मुकाबले में नजदीक आ चुके हैं। अच्छा स्ट्रोक के लाए बल्लेबाज ने, लॉन्ग लेग की तरफ गेंद जाती हुई, न इक्का दुक्का सीधा चौका, 4 रन। अभी केवल 8 रनों की आवश्यकता है यह मुकाबला जीतने के लिए। 138 पर 3 विकेट। नहीं अभी तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन जो प्रयास किया है बल्लेबाजों ने उनमें वो सफल हो गए हैं। The field up there, will that going to help the cause? Will a few dot balls change from what's happening out there in the center? Plenty of deliveries that the batting side has in hand. And then when you look at these strokes, we are now down to the final countdown on the opening day with only 4 runs required. Is it? 142, so only 4 runs required here for victory.
various conjunctures being made here. Will this match get over in this over or the next? So 143, which means 3 required for a victory. And I use the word a possible victory. But what a comeback this has been by the Central Strikers. Wonder how many of us gave them a chance here. But I kept on saying that no match is ever won or lost till the last run is scored or the last wicket is taken. And that's exactly what's happened out here on the opening day at Safale. अभी 3 रनों की आवश्यकता है। मैच में पकड़ मजबूत बनाई दूसरे इनिंग में सेंट्रल स्ट्राइकर्स इंदौर की टीम ने, और काफी अच्छा सपोर्ट्स मिला है इस टीम को भी। 3 रनों की आवश्यकता। सीधे बल्लेबाज से खेला है इस गेंद को मिड ऑफ की क्षेत्र में, फील्डिंग वहां पे। 1 ही रन मिला, टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 3 विकेट के नुकसान पर 144 144 for 3. Now 2 runs required to win in 11 ball. 11 गेंदों में 2 रनों की आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। और पहला यहां पे विन मिल सकता है बल्लेबाजी करने वाली टीम को। सेंट्रल स्ट्राइकर्स इंदौर पहली जीत के करीब। स्कोर कट करना चाहते थे इस गेंद को, अभी थोड़ा सा टर्न मिला इस गेंदबाज को। फिर भी तारीफ करना चाहूंगा अजय जैन की, जिन्होंने यूटिलिटी क्रिकेट यहां पे खेला है। गेंदबाजी भी अच्छी की और बल्लेबाजी में भी अपने जौहर दिखाए, वापस बीट किया इस बल्लेबाज को। मैच अभी खत्म नहीं हुआ है, जीत के लिए 2 रनों की आवश्यकता है 9 गेंदों में। कवर पॉइंट, मिड ऑफ पॉइंट, फॉरवर्ड पॉइंट, डिफेंस किया। ये जो 4 छक्के जड़े हैं उसके बाद में मैच में पलटवार हुआ है। ये तो मिलेंगे 4 शायद। दिनेश चोपड़ा काफी खुश, जमील तैयार थे बल्लेबाजी करने के लिए, लेकिन अभी ये मैच जीत लिया है। कांग्रेचुलेशन सेंट्रल स्ट्राइकर्स इंदौर टीम। अभी भी और 2 मौके रहेंगे दुबई रेहिनोस टीम के पास। हार्ड लक दुबई रेहिनोस टीम, आपने भी बढ़िया खेला है। हैंडशेक करें, मैं विनती करना चाहूंगा दोनों टीमों को कि लाइन अप करके हैंडशेक करके मैदान के बाहर निकले।
कौन सा अवार्ड है? और मैन ऑफ द बस ये मैन ऑफ द मैच कौन? अजय जैन 16 ball, 40 runs, including 4, 6 and ये 40 रन in 16 ball, including 4, 6 and 1 4. टाइम लगेगा कौन है गेस्ट कौन? Once again, can I request the two teams, the Dubai Rhinos, the central strikers, you can celebrate later. Central strikers, Indore, if you can celebrate later and come for the presentation. Central strikers indoor. See, yes. Right, my blood pressure went up to 200, 100 a few minutes back. If these are the type of matches that you guys are going to play over the next 3 days, I'm sure you might have, you might need the services of a cardiologist here very soon. The presentation party here on the opening day, Director of Omtex Healthware, Kunal Patel, is the son of a good friend of mine, Vijay Bhai Patel. Privilege for me to come here to do the commentary for 2 days. Along with him is our head coach, ICWC, Samir Gavas, again an old friend of mine. Welcome them for the presentation. As I said, amazing. The two sides, the Dubai Rhinos from Dubai, you have not lost. I can assure you, you can go home tonight to the hotel rooms with your head high. To the central strikers from Indore, well played, so close, not many gave you a chance, and today you come out with flying colors.
The first award of the afternoon or the evening session, the best batsman for his 42 of 39. I'm going to request Samir Gawas to do the honors. 42 of 39 deliveries with 2 sixes. Not many would guess. It goes to Manoj Khandari. Well, I can assure you 42 of 39 at the age of 50 plus, and I'm not even going to ask him what his exact age is not easy at all. Mr. Gawas and Mr. Patel, if you can do the honors for the next award, the two of you. The best bowler goes to, for a change, not the winning side, but someone from the losing side. It's always good to recognize what a losing side does as well. For his spell of 4 overs, no maidens, 1 for 17, goes to Biju Nair. I had a long chat with him before the match. In no way did I influence him for the award. Please be rest assured. And someone who came up with a sizzler. You know, as I said, over 50, not easy to do everything. The level of fielding today, I've done hundreds of T20s, ODIs and test matches over the last 40 odd years, 48 years. But trust me, I've also done a lot of veteran matches over these years. But the fielding today was absolutely outstanding. Absolutely outstanding. You know, there's only one massier out here. Kunal bhai, there's only one massier, massage for the evening. All 13 plus 13 are going to need the massier's table. So आज शाम को एक भागदौड़ होने वाली है massier के table के लिए. So I want everyone to give a big hand to the two teams for their exemplary fielding out here. The last award of the evening for his 40 runs in just 16 deliveries. Can you beat it? 2 for 22 with a wicket, 4 sixes and 1 4. No guesses. The central strikers, Ajay Jain. उधर क्या बोला आपने कर दिया आकाशवाणी थी क्या वो भविष्य मालूम था बोलो माइक पे बताओ कि क्या बोला सर ने हेलो Hi guys, I don't know whether when myself and Kunal we were sitting over there on that tent and Ajay bhai was fielding over there at deep mid wicket. Ajay bhai ने बोल दिया था कि ये मैच तो हम ही निकालेंगे खुद निकाल ली पटेल साहब मेरे पास वहाँ बैठे हुए थे और मुझसे इन्होंने कहा कि मैच बहुत मुश्किल है ये क्योंकि अगर इस टीम ने 150 रन बना लिए तो मैच मुश्किल हो जाएगा तो मैंने कहा था कि हम वन साइडेड मैच जीतेंगे क्योंकि मुझे मेरी टीम की बल्लेबाजी पर बहुत विश्वास था और हम पूरा आत्मविश्वास के साथ खेले और हमने मैच जीता थैंक यू सर थैंक यू सो मच थैंक यू Well done. Sir. So ladies and gentlemen, that's the end of the presentation. We'll of course be here tomorrow morning, early in the morning. Enjoy the hospitality of ICWC out here, Omtex. We've got a wonderful evening ahead of us and tomorrow morning we'll join you for the 2 matches at 9:30, but I'm sure the 2 teams will be here very, very early. Thank you, Jai Hind and good night.